Good afternoon to Susan and our friends in Asia Pacific. Here in Brussels and in much of Europe and Africa, it's good morning and a good time to share some messages and some context for our current crisis. The person who preceded me as General Secretary of Education International is a legend in the global education community. Fred van Leeuwen, a primary school teacher from the Netherlands, not only served in this position for 25 years, he is known rightly as a founder and architect of our federation. For almost 4 decades, Fred made it his mission to promote democracy, quality education for all, and the status of teachers around the world. And he was my mentor and still is my very good friend. He said once, and I quote, "It's difficult to be an educator and not be hopeful. You cannot work with young people every day without a belief that you are making today and tomorrow better than yesterday." It was that sort of optimism and energy that caused Fred to pursue an ambitious agenda on the global stage. A worldwide campaign to ensure that education became a standalone global sustainable development goal. Fred's persistence, along with a very inspired team of headquarters and regional staff and member organizations, moved EI's Unite for Quality Education to the forefront of global activism, and it's completed its success at the United Nations. Let's take a look at a retrospective of that campaign, including a brief interview with our friend Fred. I can't hear anything. And Facebook is still giving me this video. The world is watching us all today, here in Delhi, across India, Asia and beyond. The educators of the world, represented globally by Education International, are bringing a message to the United Nations. We represent about 13 million teachers around the world, and the passion of all those teachers will make it possible to persuade governments to do what they're supposed to do, and it is to invest in quality education. That means in quality teachers, in quality tools and in quality environments. There are still some 60 million kids around the world, and yes, progress has been made in the last 10 or 15 years, but there are nonetheless still 60 million kids around the world, and there's only one reason for it. There's only one reason for it: the lack of political will on the part of governments globally. The education community has mobilised, and we will stay vigilant until quality public education for all becomes a reality. Thank you. Organizations widely in Europe have supported this campaign. Organizations have made demonstrations, negotiations with governments, film, videos, whatever, you name it. The activity has been there. Everybody is interested in delivering high quality service in our sector. But we also need high quality support. And we need governments to recognize their responsibility for public education.
los saludos fraternales de todos vuestros y vuestras colegas. Están a vuestro lado. Seleccionar, elegir este país para ser sede de una parte de una campaña que es una campaña global, pero una campaña que es siempre permanente a todas las organizaciones nuestras de América Latina. We know the importance of access. Access to education can never be taken for granted. We know that access without quality is not enough. By itself, crossing the threshold of a school is no guarantee of learning or of a safe and positive school experience. So, colleagues, we opted to be bold. We decided that our duty to our students, to our members, and to the world is to stand for goals that are meaningful beyond simple metrics. Goals that are commensurate with what we know, that education does more than reduce poverty and hunger across generations. It improves health outcomes, especially for mothers and children. It improves the economic health of nations and the sustainability of entire ecosystems. It raises the likelihood of peaceful resolution of conflict, and it enhances participation in the democratic process. This is the power of quality teaching, quality tools and resources, and quality environments. If we have quality education, there will be no Boko Haram. There will be no poverty. There will be no early marriage. There will be no prostitution. It's very clear to us that the MDGs are unfinished business, and they have, for what it's worth, they have done good. They have galvanized people. We've got lots of lessons learned of what's worked. Can I say, first of all, what a real privilege it is to come a year after you launched your quality education campaign to congratulate you on the success of it. It has been a year in which all your member organizations have been involved in this campaign. It's a year in which campaigns in individual countries have been run, I understand, by 120 of your member organizations. And it is a year in which people have become more aware of the challenge facing education in the long term and the need for more teachers, the need for quality education, and the need to solve the social problems that prevent young children getting the chance of going to school. So I want to thank you, first of all, for the work you do, for the dedication you show, for the commitment that is demonstrated every day by the work of teachers and schools, and for the difference you make. There is nobody who forgets the teacher, nobody who forgets the teachers in primary and secondary school. I could name you every one of my teachers. You have a profound influence on people's lives, and now you are campaigning for the general good of education, and I want to congratulate you for what you have achieved. The unprecedented mobilization of the Unite campaign this past year is only the beginning. Our commitment to our members is to build upon our success to make a lasting difference. We've come to the end of our culmination events. From Sydney to Delhi, from Delhi to Pretoria, from Pretoria to Brussels, from Brussels to Buenos Aires, ending up today here in New York. It's not the end of the campaign. It is a pit stop, because when it comes to the educators of the world, you ain't seen nothing yet. Colleagues, as we get ready to start our day in Europe and Africa and move into the afternoon and evening in North America, Latin America, we're going to present a series of videos and recorded messages
including strong support from important allies in the international community, and some longer form videos produced by EI and our friends, like Kailash. But first, we're going to travel to Oslo, and our Deputy General Secretary, Haldis Holst, who will take over the moderation from the Global Hub. Good day. I'm honored to join you in celebrating World Teachers Day at a time when educators around the world are facing challenges that go far beyond what any of us would consider to be normal. Teachers, you have our deepest admiration for how you've adjusted to the realities of this pandemic, whether that's radically adapting your lessons for online schooling, going the extra mile to support students who might not have access to the internet, or braving the risk of reopening your classrooms. The pandemic has affected teachers differently around the world, reflecting inequalities that have already existed. Schools and communities in richer urban settings have had a far different experience than those, for example, in the townships of South Africa, where I served as U.S. ambassador. But what leaves me in awe is the steadfast commitment of teachers, whatever the challenges, a commitment to young scholars who are already leading on the future that we so desperately need. The pandemic is not the only challenge we face today. I serve as president of the Open Society Foundations, the global philanthropy founded 35 years ago to promote, among other things, academic freedom and open debate. Today, these principles are under threat around the world. In Brazil and Hungary, for instance, we've seen self-proclaimed illiberal governments seek to rewrite school textbooks to foster monolithic nationalist historical narratives. We're even seeing that idea being floated by the President of the United States. Teachers and teachers' unions have long played a vital role in pushing back against this kind of authoritarianism, facing attacks from those who want to put a rein on critical voices. Teachers face political violence and, at times, are forced into exile. At the Open Society Foundations, we're proud to support advocates around the world who want to stand up for academic freedom and who believe that education is a right that should be accessible to all. I'm particularly fond of teachers who focus on access to learning for girls in places where those opportunities have been denied. Nothing less than our very survival depends on our ability to rely on science and reason over fear and ignorance. This is a struggle that involves us all, but especially led by those who work with our children, teaching them to question, to think, and to imagine a better world. On this World Teachers Day, I salute our incredible educators from the bottom of my heart. Thank you. Hi, my name is Sharon Ananakwa, and I'm the head of history at a school in London called The Convent. Facing History is a huge support to our department. We've completed professional development with CPD, and their resources online are invaluable in providing us with critically conscious materials to help empower our students with historical knowledge. Particularly in this year, this difficult year of 2020, having the Facing History approach at our fingertips has been invaluable. Because our students are used to using the Facing History model and approach of thinking about their identities, thinking about the role of decision making in times of injustice, it has really helped them make sense of what's happening globally this year. Facing History is an amazing organisation and a core part of what we do as teachers. Thank you for helping us to empower our students. Bonjour, je m'appelle Marguerite Graff et j'enseigne l'histoire au lycée Renoir à Asnières en banlieue parisienne. Pendant le confinement, Facing History m'a beaucoup aidée, en particulier grâce aux bonnes relations que j'avais établies avant en classe avec les élèves. Et ces bonnes relations ont été déterminantes. Grâce à Facing History, j'ai plus d'audace pour enseigner les sujets difficiles en histoire. Et dans ce cas, je sollicite mes élèves en tant qu'être humain à part entière. Je parle à leurs émotions, j'écoute leurs questionnements moraux, leur envie de justice, et je crois que cette approche positive, optimiste, augmente leur engagement vis-à-vis de l'école. Et elle contribue aussi énormément à une meilleure ambiance à l'intérieur des classes. Facing history and ourselves has been invaluable to me as a teacher in the pandemic. After the death of George Floyd, I started thinking about how I can be an anti-racist educator and how I can work to make my classes in my school more equitable for all.
I literally started doing this work alone in isolation and was thrilled when Facing History gave me the opportunity to participate in the Equity and Social Justice Summit in July. I had the opportunity to engage with like-minded educators from across the continent in a way that I never had before, and I'm really excited to have this community to continue doing this important work with. Hi, I am Milton Pangwa and I teach history in high school in Worcester. I've been working with Facing History and ourselves to improve my result and teaching capacity. We've been faced with the corona pandemic, which made it impossible to meet face-to-face. I have turned to Facing History to get resources to teach about racial justice and discrimination. I made use of their webinars and the Equity Summit they usually host. I think the future of education includes continuous efforts to change our schools to be just and inclusive. Facing History, I strongly believe, will remain and continue to be a partner in that endeavor as well. Thank you. Hi, I'm Marge Brown and I teach at a girls' school in Johannesburg, South Africa. During lockdown, we had a lot of discussions, which I led, on racial equity and transformation in the context of the Black Lives Matter protests. And the resources from Facing History and ourselves were so useful. I also used the resources during this time for the Climate Action Project, for which I am an ambassador in South Africa, because Facing History and ourselves has some fantastic resources around climate justice. I recommend this resource to everyone. Thank you. Hi, my name is Carlos Recordon. I teach at Prepatec Eugenio Garzazada in Monterrey, Mexico. Over this period, Facing History has supported me to encourage my students, myself, and other teachers to reflect on how powerful are our choices and the impact they have in our communities. I think the future of education is the present. Our challenging task is to be and to educate change makers. Hi, I'm Carrie Clymer and I'm a Bay Area teacher. As we worry about the isolation that our students are experiencing this year, Facing History prioritizes learning through connection. As we wonder how to bring the needed change to our schools this year, Facing History provides teachers with lessons that uplift student voice. أعزائي المعلمين أينما كنتم، لكم المعلمون الأعزاء بالغ التقدير، فدوركم مميز دوما، لكنه في ظل جائحة كورونا بات مضاعفا أكثر. صحيح أن الجائحة غيبت حضور كثيرين، لكنها عززت استحضار المعلم باعتباره حجر الزاوية في العطاء. لقد كان حرصكم واضحا على أن تكون استجابتكم للجائحة تشمل حقوق ومصالح الطلاب والمعلمين على حد سواء. كل المنصات الإلكترونية والبرامج والخطط والتطبيقات الإلكترونية عجزت على أن تكون بديلا عن المعلم، فكل هذه الوسائل تظل عاجزة عن توفير الروح النابضة بالبعد الإنساني. ومن هنا فإن الجائحة تفرض علينا المزيد من الاهتمام بالمعلمين وتحسين أوضاعهم. يواصل المعلمون دورهم بما يتجاوز الجانب المعرفي، فهم العنصر الفاعل في إعمال الحق في التعليم وتعزيز قيم المواطنة والعدالة، وكلنا مطالبون بتعزيز مكانة المعلمين، وهذا لن يتحقق بالتنظير بل بتشريعات وقوانين وأنظمة تجعل الاهتمام بالمعلمين محكوما بالاستدامة. خلال كورونا قدم المعلمون نماذج ملهمة ومبادرات سواء في التعليم عن بعد أو بالقرب العاطفي والوجداني من طلبتهم رغم البعد، وهذا ليس غريبا، فالمبادرة والإلهام جزء من التكوين الفريد للمعلمين، وهم يواصلون مواجهة التحديات قبل الجائحة وخلالها. للمعلمين الشباب المنضمين حديثا لمهنة التعليم كل الحب، وللمتقاعدين منهم خالص الوفاء والحب، وللمواصلين العمل أطيب التمنيات بالنجاح. فالقاسم المشترك بين كل هذه الأجيال إشاعة الأمل. للمعلمين في مخيمات اللاجئين وفي مناطق النزاعات وتحت الاحتلال في فلسطين وفي العالم كله تحية خاصة وتهنئة صادقة مع أطيب التمنيات لهم بمواصلة دورهم الرائد، مع الأمل بأن تترجم أقوال العديد من رجال السياسة عن ضرورة تكريم المعلمين على أرض الواقع عبر تشريعات
تحقق مهنة التعليم. فضلا عن ذلك هناك أهمية لإشراك حقيقي للمعلمين في الحوار الاجتماعي بما في ذلك السياسات المتعلقة في التعليم. لهذا يجب أن نكون متحدين. والسلام عليكم. Thank you to our partners for those wonderful messages on World Teachers' Day. They warm a heart of a teacher, and it also warms my heart to hear the voices of teachers of the challenges they have taken on, even in difficult times. I heard what our General Secretary David said at the beginning of this session, referencing our former General Secretary Fred Leuven, who had said that for a teacher, you need to be hopeful. And to be able to be hopeful in challenging times, when you are walking the extra mile, when you are really trying to be there for your students all the time, you need to have a certain sense of well-being. And that is going to be our topic for our conversation now. Teacher well-being amidst a pandemic. To have a conversation about that, I am very pleased to welcome with me Maria Röhm, who is Vice President of Lärarförbundet, Sweden. Here we see, welcome Maria. It's quite early morning for us, but we're ready to go. Yes, we are. Thank you. Yes. So I was wondering, when we talk about this well-being in a time that's so challenging, can you reflect a bit? What are your thoughts around what well-being actually is for a teacher? Well, teacher well-being and a sustainable teacher's life, as we used to say in Sweden, requires a balance between expectations on the one side and resources on the other side. But given the big teacher shortage in Sweden and the budget cuts that are carried out and are still carried out, even though we have the pandemic to fight, we see that several employers fail to deliver the balance required. So that's a bit of the context we're in. But guided by scientific research, we have identified a series of health factors as a key in developing a sound and healthy workplace for teachers. And one factor is a school leadership that is characterized by presence, trust, and engagement in teachers' work and conditions. Another factor is real possibilities to influence decisions that affect us as teachers in the daily life. And these two issues, together with a few other issues, make a better structure at the workplace, I think, that can change the teacher well-being for the good. Yeah, thank you. And I know, Maria, in Sweden, you have to a certain extent gained some experiences that are a little bit different from many other countries, since you had policies which led to that all schools have not been closed all the way through the pandemic. So your members have really had the challenge of trying to handle both on-site and online teaching, which must have been quite a strain on that well-being. I know that you've also, in Lärarförbundet, you've done a survey to try to find out how they really had it during the pandemic. What are some of the key findings in that survey? Yes, that's right. We made a survey during the second half of May, after 2 months of teaching under the pressure of the pandemic. Our member stock is teachers from early childhood education all the way to higher education, and also school leaders, and all those different groups took part in the survey. The Swedish context, as you mentioned, is that our secondary schools, our higher education and adult education closed in March and switched to distance education and online education, but preschool and 1 to 9 grade schools, they remained open. But since children and pupils were kept at home,
by the parents due to maybe illness, but also due to fear of contagion. Teachers had to do online teaching as well as ordinary teaching at the same time. This was combined with the situation that a lot of teachers also, of course, fell ill. So we also had to cover for absent colleagues and also carry out some of the hygiene things that need to be done to prevent contamination. So in this context, we made the survey, and we could see that 67% of the respondents answered that their workload had increased during the pandemic. And the increased workload is not only an issue of both teaching in school and from a distance and covering for colleagues. 25% of the teachers asked declared that they themselves had carried out the additional cleaning in the workplace, which the health recommendations required. And this is quite remarkable, I think. And moreover, 65% expressed that they are worried that they themselves or mostly their colleagues would need a sick leave if the pandemic would continue during the fall. And this was not a concern of a sick leave as a result of COVID-19, but as a result of the additional stress that the pandemic has brought onto us. That's really a story of teachers going the extra mile during these difficult times. But I'm wondering, Maria, through your survey, but also through your experience through this pandemic as Lærerforbundet supporting your members, what do you see any gender perspective? Is this hitting female teachers and male teachers in different ways? Yes, I think so, because at first I would like to say that women constitute the big majority of teachers and school leaders in Sweden. And the share of male teachers increases slightly the older the students or pupils are. But looking at the situation and the increased workload that we see in our survey, we can see that covering for absent colleagues and being made responsible for the extra cleaning during the pandemic, all these are more pronounced among teachers in preschool and earlier grades, primary education. So it would be safe to say that women have been affected to a larger extent due to the structural inequalities in the education sector as such. But also the structural inequalities regarding to the division of labor in the household have also become more visible during the pandemic, because alternative chores such as taking care of the grocery shopping for elderly relatives who couldn't leave their homes because of risk to get the disease, and providing support for children who are studying from home, all these most likely goes to the women, because we see that kind of a diversity in the household work. So the combination of increased workload, both at work and at home, make women increasingly vulnerable to stress in this situation, I'm sure. Yes, I think that's a story that can be shared by very many colleagues around the world, and not underestimating the stress that also men have in doing their job, because we share that in the profession. But at the same time, seeing that different people do have different circumstances because the totality of their lives are different. But how do you see that you, in Lærerforbundet, or as a trade union, how can you support your members, whether it's from a gender perspective, but also from a broader professional view on supporting them in ensuring their well-being as far as it's possible? I believe that we can do a lot, and we do. I mean, teacher well-being is one of the core business for us as teacher unions. So, of course, we need to address this. And I think just talking about the issues in media and with the members when we meet them
is one way, so that they feel they are not alone in this struggle. But also in Lärarförbundet, we have just recently adapted a new strategy for our work environment efforts. And the strategy, it points out clearer responsibilities and different levels in the union, but it also shifts focus a bit to more working with promotion and prevention on an organizational level, instead of just looking at the different cases. I think this. I think it makes sense to focus on preventing, and it's a rational way to work with work environment issues. I would say this is not an approach that implies an unwillingness to take concrete action when there is a situation, but by changing the perspective towards prevention, we believe we can make a bigger difference. And then there are the traditional trade union work, as collective bargaining and collective agreements. They are key to support teacher well-being, but it's also essential to keep lobbying to the politicians and administrators at the municipality level, but also on the national level, regarding their responsibilities to guarantee sufficient resources for a sound working environment. So I think a lot of the work that we usually do also can be used to prevent harm being done in stress caused by extra workload during the pandemic. And now today, to celebrate World Teachers' Day in Lärarförbundet, we also kick off a larger campaign on teachers' well-being that we will work with for a couple of weeks following. And the method that we will use is first and foremost by a workplace dialogue, where we focus on these health factors that I mentioned earlier. What we would like is to move from an unsustainable situation where teachers and school leaders suffer from stress-related illness, and where they actually move on to different careers as a result of this, towards a healthy, sustainable work situation characterized by well-being. We call it from risky to healthy workplaces. And doing this by dialogue, I hope that we can also make teachers themselves feel a part of developing their school and their environment to the better. And I think, and also our survey shows that teachers want to make a change, want to make a difference. I mean, that is one of the core ingredients in being a teacher. So by involving everybody in this dialogue, I hope we can do that. That sounds fantastic, Maria. I really like that, from risky to healthy workplaces. That's all about supporting teachers so they do feel a sense of well-being in going forward. And I also think that you make a great point of highlighting the importance, seen from a union perspective, of the union rep at the workplace in driving dialogue, both with other teachers, getting them together, but also with their employer, so that you, through dialogue, can figure out how can we support and help. You both need to be the watchdog, but also to pull forward and support in that. And I really would like to wish you good luck, you and Lärarförbundet and all your members in Sweden, with that campaign. And I'm really looking forward to perhaps hearing more about how you're conducting it, because I'm sure that this is something that can inspire and support teachers and unions all over the world. So thank you very much, Maria, for joining us today on World Teachers' Day and talking about well-being that is so important for teachers to be able to do their job and go that extra mile that we want to do, but we also feel the pressure of sometimes not being able to go and do it. And then we need our support from our union reps at work, regionally and nationally and
globally from Education International. So thank you very much, Maria, and happy World Teachers Day as we move forward. Thank you, Haldis. Together we make a change. Bye. Yeah. Bye-bye. We will make a change together and with all our members all around the world. And as Maria was saying, the way the pandemic has hit us has been in many ways the same, but also in many ways different. It's dependent on where in the world we are, our local communities, but also the sector we work in. As we heard from Maria in Sweden, they went over to online education for the older students while they stayed on site for the younger students. We are now going to have a special dive into the situation within higher education and look at how has this pandemic hit the people who work within higher education. Are there any specifics there on the precarity of work, on academic freedom? And to do that, we're going into the next global dialogue. So, welcome wherever you are around the world into our celebration of teachers in every corner of the globe and in every sector of education. I hope you stay tuned in now because we are going into a very important conversation about how the whole situation that teachers and academics have been experienced through the lockdowns connected to COVID-19 and everything happening as the consequence. We are going to go into a discussion on how this has impact on higher education and research. And I'm very pleased to have with me two representatives of the sector from two different parts of the world. We have Joe Grady, the General Secretary of the University and College Union, UCU, in the UK, and Matthew McGowan, General Secretary of the National Tertiary Education Union in Australia among us. Welcome to both of you. And thinking about how I've seen that this has impacted on higher education, and I see it from the outside. But one of the things that really has struck me is that it's maybe quite different in different parts of the world. I sit in Norway, and we have in Norway had record applications for higher education. And partially that is because we are what we would call a sending country. We send our students abroad. Other parts of the world, you are receiving countries. You may be experiencing that students are not able to attend your institutions that you were expecting. And I expect that that has had quite a large implication for your members in the sector. And also, what has happened to their jobs, their working conditions, and the basis of higher education academic freedom? Do you see any implications of this through your members and their way of working in these very difficult times that we've been through? We go to you first, Joe. Yeah, I guess the conditions for UCU members in the UK are going to sound quite familiar to a number of people listening to this, and I think actually particularly in the Australian context. What we have seen during the pandemic is some of the worst problems that we already know existed in the sector exposed. So we have seen the attempt to attack the terms and conditions of staff who teach in the sector. That ranges from pay cuts to redundancies to attacking research time. Actually, we've seen, so in the UK, the average teaching and research contract for academics tends to be 40% research, 40% teaching and 20% admin. And some of what you've seen is the intensification of workloads by removing research time from members of staff who are not deemed to be kind of successfully research active. And how successfully research active has been framed is, do you have the right research funding from the right type of research councils? Are you publishing in the right research journals? So that very kind of notion of what your academic freedom is and what counts as legitimate academic knowledge really being policed and managerialized, if you like, in this moment to really push those frontiers of managerial control of what academics can and should do
even further than has happened before. And we're really concerned about that. And on a local level, where that has happened in institutions, we've been pushing back. Members in branches have been pushing back. But it has been a key characteristic of how universities have tried to implement control over those areas which we know they've wanted to control, but have not really been able to find always the most appropriate way to do it. Another problem that we've had, and again, I think I've seen the parallels of this elsewhere, is the emergence of kind of the new right authoritarianism of wanting to control what qualifies as legitimate academic research and what we should be teaching, and really conflating that with notions of free speech. So at the beginning, or maybe halfway through the period of lockdown that happened in the UK, when higher education was seeking extra funding from the government to get through what might be a drop in student numbers and therefore income because of the way in which UK HE has been marketised, the government tried to apply a number of strings to that funding. And those strings were an attack, in our opinion, on both students and staff in HE. So student activism via student unions in the UK was attacked, and the suggestion of the strings that was proposed to be attached to this bailout funding was niche activism had to be discouraged in student unions. And, you know, in the UK, our student unions have been engaged in Black Lives Matter protests, pro-trans protests, supporting their academic members of staff on picket lines. You know, these are not niche activities, but they are activities that right-wing governments don't want to see students involved in. And then in terms of staff, there's been, again, kind of new authoritarian attacks on what we should be doing research on, what we should be teaching. We've just recently seen in schools in the UK the idea that schools should not be teaching anti-capitalist education, but also in universities, this includes the idea that you have to platform people. So we are really quite concerned about what we've seen in this period, and that what we've seen really has been the attempt to use a crisis moment to insert these sort of new authoritarian ideas of controlling education more broadly in terms of what universities are for, what the role of universities are, and what the role of student activism within universities is. But then, as I say, on a more kind of individual micro basis, we've also seen the policing of research time and the policing of what counts as legitimate research that then guarantees you to keep your research time. And what we're really concerned about in this moment is not to accept any of this, even for a short period of time, to get us through this crisis, because that will become the new normal. So we've been giving really clear guidance to our branches that if they are to engage in any of these things, that it cannot be to the detriment of their long-term contracts. Thank you very much. I'm wondering, do you recognize this, Matthew? Is this the same situation in Australia? A lot of it is very similar, but there are some, I think, stark differences in the Australian context. Around about 30% of the funding for the sector comes now from international student income. And that has had the closing of the borders and the shutting down of international travel has really dramatically changed climate for the university sector. So the most dramatic impact on the sector is a loss of some $3.5 to $4 billion in this year alone. And if we project forward into next year and the following year, the full estimates are looking pretty grim. That number could easily double or triple. We are in a very serious position. All of our universities are starting to lay staff off, and particularly you'll find that casual staff are being laid off in very large numbers. We are facing a crisis within our institutions in the research front. Most of our universities cross-subsidise research from the international student income. Governments of all persuasions over the last couple of decades have used international students as excuses
to expand the sector, but also to reduce the government's responsibility for fully funding the sector. And so increasingly what we've seen is institutions become dependent upon that international student income for their very existence and for the funding of many of their activities, including research. It is a very serious problem. We are seeing, at the moment, we are expecting something of the order of 20,000 jobs to disappear out of the sector over the next 6 to 9 months. The government has done nothing to provide any support to the sector so far. We have a budget coming up next week, and it's later this week rather, and it's quite possible that there will be some relief provided to the institutions, but it's unlikely to go anywhere near the losses that the institutions are facing. So our major crisis at the moment is holding on to people's jobs. We are seeing people terminated at a really rapid rate. I think I said earlier some 4,000 contract staff are up at the end of this year. Those are primarily research staff. The people who are most dramatically affected, there are courses being cut all over the place. But I think probably the lion's share of those full-time job losses will go to the professional staff as the institutions cut back as much as they possibly can. And I think in the same way that Joe has described, the institutions and the government in some ways are using the crisis to further objectives that they may have already had in their back pockets and that they have been pursuing for some time. So, you know, the issues around academic freedom are again being talked about and as Joe indicated, conflated with free speech, particularly from the right. It's an interesting position for the union because there are elements of the debate where we are promoting it, because I think there are some circumstances in Australia that indicate that the legal framework that we have always relied upon for protecting academic freedom is under challenge at the moment from a number of different cases that have been through the courts. And so we have to find a pathway through this with a conservative government to be able to find both a legislative but also a bargaining response to this challenge. The other interesting dynamic, so it's not all, you know, it doesn't all go one way. I think a crisis like this highlights and gives greater attention to existing tensions that are already within the society. So one of the things that's happened is it's been pretty clear that many of the crises in Australia around outbreaks, serious outbreaks of COVID, have come from workplaces primarily, and workplaces where there is heavy casualisation. And so the nature of the community discussion about casual work has shifted. And I think people's expectations about what's acceptable is shifting. So it's an interesting position for us to be in, to enter into a debate about the future of casual work in the higher education sector. We have an opportunity to capitalise on that, as well as having to deal with the threat we're currently facing on a day-to-day basis. Oh boy, we really have our jobs cut out for us here. But I'm wondering if both of you very briefly, just in a sentence or two, could reflect before we round up that you see that all the inequalities around the world seem to be amplified through this crisis. And do you see anything within your sector of inequalities being amplified? I've read articles about the female academics, their publications or publishing seems to be going down during the pandemic. Joe? Yeah, I mean, completely. What's happened, what was just outlined then by Matthew, has been happening here in terms of casualised staff were the first to lose their contracts. In the UK, we have disproportionate amounts of Black women who are casualised, Asian women, disabled staff. So the very idea that they're the first staff that during this crisis universities sought to either non-renew their contracts or make redundant is yet again the idea that you know, those the most privileged, those the most secure keep their jobs whilst others are let go. And we have seen increasing reports in the UK that men
male academics have really benefited in terms of their research during lockdown, perhaps because traditionally they don't carry the societal expectations of that caring burden. And I think the data that we've seen of submissions to journals suggests that women's research outputs have just completely dried up. And of course, this is then going to have consequences once everybody is back in the work, the next ref cycle that we have in the UK, of who was and wasn't productive, during lockdown. Matthew? Yeah, I mean, there is clearly a disproportionate impact, particularly on women and people of colour. I think that there are not only because of the primary or the higher levels of terminations or contracts being terminated for people who are in professional jobs, because that is a more feminised part of the workforce compared to the academic workforce. But also at the same time as all of this other stuff is going on, we also have a restructuring of the funding arrangements the government is prosecuting, which in effect reduces the per student funding for universities at the same time as we're dealing this $3.5 billion cut. We also, part of that is shifting the cost of education away from, increasing the cost, particularly to humanities and arts programs, and reducing the cost for science and engineering related programs. And the consequence of that, of course, has a gendered impact as well. The government's primary stated objective is to increase, to get more science graduates developed. But of course, the nature of the funding to the student isn't necessarily the key driver of student engagement. Mm-hmm. And I think that it's going to have a disproportionate impact on the very people that we should be doing to protect and assist. Thank you so much, both of you. And I really, on behalf of everyone who's listening and everyone around the world, I wish you the best of luck of working with your members and the best for your members. They do a very important job. All the teachers, all the academics around there, we must keep supporting them. Thank you very much. So that was a very, for me, interesting conversation about the situation within higher education. Now, we are going to go into our film fest. We are going to show you 2 films. The first one, with the title The Price of Free, is a documentary that shows you, and I think it's very touching, the story of Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi and his endeavor, his work through a lifetime of trying to free children from slavery and child labor. After that, we will be showing Teachers: A Day in a Life, which is a documentary produced by Education International with support from the Open Societies Foundations. And it shows you a day in the life of the teacher, we can say, before the pandemic, by putting together the realities for professionals in different countries around the world. So please, sit down, watch, enjoy, and reflect. मुखबिर से सूचना मिली है कि वहाँ पर 30 से 40 बच्चे काम करते हैं। S1 आप तुर्कमान गेट से रिपोर्ट करना। आज गए हम लोग आ गए भाई पॉइंट ये था ना ले आओ नहीं तो तुम लोग का हजामत बनी जाएगा
किसने कहा खाली है? तुम कैसे कह सकती हो खाली है? अच्छा चलो खोलो खोलो, तोड़ो इसे। अरे यार इसको तोड़ो किसी चीज से, इसको तोड़ो। 4-5 लोग तोड़ो। चलो हम जा रहे हैं, चलो। कहाँ गया? मैं तीसरे पे चलता हूँ। ये तीन लोग चाबी लाए हुए, ये तो हथौड़ा या नहीं है कुछ, मतलब हद होती है यार। आगे आगे सब नीचे, बिल्कुल बस। इससे आगे कोई है? चल आ गई। आज खाली क्यों है? और लोग कहाँ हैं? और कहाँ जाएंगे? तो देखो जल्दी जाओ। जाइए जाइए मैडम जाइए। बता कहाँ है? बता कहाँ है? जंप करके देखिए मैडम। जा गोदाम। अच्छा निकल। निकलो बेटा बाहर निकलो। चलो हम तुम्हारे साथ में, चलो आ जाओ। चलो चलो चलो। लास्ट तक देख लिया ना सर आपने? हाँ उधर देख लिया। निकलो बेटा बाहर निकलो। निकलो सारे के सारे, निकलो निकलो सारे के सारे। और कहाँ छुपा हुआ? और बता और कहाँ छुपा हुआ? चल चल जल्दी। और दिखा बच्चे। ओए और ज्यादा गर्मी में थोड़ा अंदर है। निकलना मर जा। वो उधर बहुत सारे हैं। निकल बाहर निकलो, डरो मत। हम तुम्हारे साथ में। चलो चलो लारे ऊपर चलो हम जा रहे हैं। तो तू लात पड़ जाएगा तो दब जाएगा वैसे भी। बाहर चलो बाहर चलो। मैंने खुद देखा था इन सबों को कितना जल्दी हम निकल रहे हैं। अरे चल लाइन से खड़े हो। अरे चल तुम लोग का सब कुछ नहीं होगा। इसमें भी देखो, भी लिखो ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? When I went to school for the first time, I saw a boy of my age sitting outside the school gate, working on the roadside. I will never forget the boy's eyes. I asked my teacher, friends, and my family, why this boy is not going to school? Everyone tried to convince me these people are poor people and their children have to work. It was a shock for me. Why some people are born to work at the cost of their childhood. These files belong to different rescue operations. The numbers are the numbers of the children rescued. 25 children, 25 children, 3 children, 2 children. So this is one of the biggest rates where we were able to rescue 63 children. I have one single mission. Every child should be free to be a child. For these children, it's the end of one reality and the beginning of another.
आजा बाबू आजा 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 खड़ा हो इधर आ, मेरे पास आ, इधर बैठ जाओ, चलो आ जा। क्यों रो रहा है बेटा? क्यों रो रहा है? क्यों लग रहा है डर? क्या नाम है तुम्हारा? करीम। तुम्हारी अम्मी है बेटा? और अब्बू हैं? कहाँ पे हैं? और अम्मी? कहाँ, दिल्ली में या वहाँ पुणे? तो यूपी में। तो तुमको उनकी याद आती है? जाओगे वहाँ? भाई बहन भी हैं तुम्हारे? तो अब डरो मत, डरने की जरूरत ही नहीं है। तो हमसे दोस्ती करोगे? इतने दाढ़ी वाले से दोस्ती करोगे? दाढ़ी देख मेरी, हाथ लगा के देख। और ज्यादा जोर से लगा, इधर साइड में लगा, इधर। अच्छी है दाढ़ी? तुम्हारी नहीं है? दिखाओ दिखाओ। तो दाढ़ी वाले से दोस्ती कर सकते हो? आजा ऊपर आजा। When I started my fight against child slavery, nobody was talking about it, nobody was knowing about it. There was no person, no organization, nothing. He started work as an engineer to honor the wishes of his father. But in his heart, Kailash was always an activist. That's how he met his wife. Sumedha was a newspaper editor, moved by Kailash's articles about the oppression of women and children. Out of their one-room apartment in Delhi, he launched a magazine to create awareness about the issue. One night, a man came to his door. He had escaped a brickmaking factory where he and his daughter were enslaved. She was about to be sold to a brothel, and he was asking for help. She was stripped and they were touching different parts of her body to negotiate the final price. I started thinking, if she was my daughter, I would turn the whole world upside down to rescue her. I told him, I'll go with you to rescue your daughter. He said, these people are criminal. They can kill us.
I had to come back to Delhi with empty hands. A failure. Kailash stayed up all night. He decided to use photos from the raid as evidence and took them to a judge, who ordered the slaves released. I was so overwhelmed with joy and emotions. We were so energized. We decided to go and liberate more people. The next week, Kailash rescued 163 more slaves and kept going. He and Sumedha founded Bachpan Bachao Andolan, BBA for short. It means Save the Childhood Movement. 30 years ago, many people thought that slavery has been abolished. They were wrong. My colleagues and I have freed over 80,000 children. Each time a child is freed and the smile of freedom appears on her face, is it not enough to be inspired? Nearly 4 decades after they started BBA, Kailash has more than 200 activists, social workers, and lawyers working alongside him to fight child slavery at every level. हेलो। हाँ हाँ स्वाति जी नमस्ते। एक लड़का गायब है, तो उसका जो सोनू उसका नाम है। तो ये अभी अच्छा ये बताओ बच्चे की उम्र क्या है अभी? 13 साल का है। 8 महीने हो गया अभी तक बच्चा नहीं देखा। अब दुनिया में है ना नहीं है, नींद का तोड़ में गिर उड़ जाएंगे, अपना जिंदगी मेरा भी बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा भाई सोनू है। बाहर में ये सोनू का बच्चा। हाँ यही सोनू का कपड़ा है। अभी वही बच्चा का कराया में दुआ ताबीज तरबद मजार मजार हर जगह करनू। अभी तक मतलब पता नहीं लगे जे कौन छ नहीं छ। आपके बच्चे को कौन आया, कैसे चला गया वो? बच्चा यहाँ से लेके गया कारखाने वाला, हाँ आले रसूल। कारखाने वाले क्या नाम है? आले रसूल नाम है। दलाल का नाम जो है सो आलिया रसूल है। आलिया रसूल। हमरा बने फिर नहीं पटा है पठारे पर होना बने रखूं बढ़िया कर रखूं अच्छा कर रखूं। हाँ ये दलाल जो है आलिया रसूल। हाँ जी हाँ जी। हाँ उन्हीं का नंबर है। ठीक है। 50878476। अब बच्चा को क्या किया नहीं किया, ये बच्चा को लिए बहुत चिंता है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा पता है। दादी दादी कहाँ दादी दादी कहाँ? आओ जो खड़े हो जाएगा नहीं आओ जो।
आज नहीं यार, आज मूड नहीं है। देखो कौन है? अरे बहुत लोग आ रहे हैं। ओह! दादी कहाँ? ताली बजाओ, ताली बजाओ। बजा दो। तो दादी। When Kailash first started rescuing children, he and his wife Sumedha would bring them to their home. But they realized that rescuing them was not enough. So they set up Mukti Ashram to help with their recovery. हंस तो रहे नहीं हो? पुलिस पकड़ के लाया। नहीं बेटा, तुम्हें छुड़ाया है। भेज नहीं गया। है हाँ, माँ बाप के पास भेज देंगे तुम्हें। पता नहीं रहते तब। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनके माँ बाप, सबके बच्चों के माँ बाप को ढूंढा जाता है। हाँ ठीक है। आश्रम की शुरुआत की, उसके बाद तो हमारी और दृढ़ मान्यता हो गई, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे जब छूट के आते थे, इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, इतना ज्यादा मारा। Right from childhood, I was a part of everything that was going on. You know, you were pretty much born into it. The kids rescued were my brothers. So every festival was spent with them. I could understand these little kids need to be with their parents. I could understand that these kids are not in school like me. That activism was sort of right there from the get-go. We were taught to question everything. This was life. This is how I was growing up, with the ideals of revolution and change and equality, freedom, freedom from exploitation, justice. I consciously engage them in my work right from their childhood so they can understand, they can feel, they can experience what I do. I could never go to their schools and their parent meetings and so on. I told them there are many more children in the world which need me more than you. सबसे छोटा कौन है? क्या नाम है बेटा आपका? हैं? करीम। आके अच्छा लग रहा है? नहीं। अभी नहीं अच्छा लग रहा? अभी कपड़ा नहीं तो फिर यहाँ क्यों नहीं अच्छा लग रहा? पकड़ के नहीं लाए बेटा, अभी देखना वहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा बच्चों को क्या अच्छा लगता है ये बताओ। चलो सबसे अच्छा बच्चा क्या लगता है? क्या अच्छा लगता है बताओ। रोटी खेल पढ़ाई। नहीं, दोस्ती करी है तुमने? नहीं करी ना अभी? नहीं करी ना अभी? खेलना अच्छा लगता है? वहाँ पे खेलना मन लगता था? It's difficult for them to have trust in anyone. So we start with some small things to build their self-confidence, restore some sense of dignity. ये आ जाएगी देख। इसके लिए आ रही? नहीं आएगी। ये सब देख। चलो अभी तुम्हारा भाग उस वाली थी, ऊंचाई तो चल जाएगी। बेटा ये नंबर पर संजीत ना? संजीत। इसका नाम का कुछ कंफ्यूजन है। कितना दिन काम किया? यह 1 साल। कोई सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं है? चल हो गया राइट? सांस लो। बुखार जुकाम जो ऐसा कब हुआ था? घाव हो गया तो फैक्टरी में था। लो। ये सफा नहीं होगा? नहीं, अब तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे आएगा ये। ये दर्द कितने दिन से है तुम्हारे? 3 साल। 3 साल से दर्द है? तो वहाँ पे तुम मालिक को नहीं बताते थे कि हमारे पैर में दर्द होता है? मालिक को बताते तो फिर थर से क्यों पूछ दिया था? थोड़ा सा झपा रहा है इसलिए। These children have no freedom. They're forced to work like animals. 12, 13, 14, 15, 16 hours a day.
Sometimes when he was out on a rescue mission, his family wouldn't hear from him for days. And often those raids turned violent. Kailash's leg and backbone were broken, and his skull was fractured. That was scary. But I don't remember my mother freaking out or getting scared. She was a pillar of strength, always there, and she was so normal through it all. हम अपना प्रयास क्यों छोड़ें? मौत तो निश्चित है। अगर जीवन आया है, पैदा हुए हैं, तो मरना ही है। For us, sacrifice is what builds the foundation of change. I am just one single human being. My wife, my son or my daughter, if we are killed, that would not be a big loss for this planet. But if millions of children are trapped into slavery, that is a bigger crime. To find Sonu, the team must go undercover into Alia Rasool's factory. This boy has been missing for last 7 months. Sonu has been trafficked to Delhi for one of Who the... took him? Well, this trafficker, whose name is Alia Rasool. So And the child has been taken to Delhi. Taken to Delhi. Do you have any clue where is he working now? Turkman Gate. Acha. This is dangerous area. Yeah, this is a dangerous area. That's what the thing is. So We have been attacked there 2 times. At least 2 times. BBA has been attacked because factories were sealed and local owners arrested. Each time a child is rescued, a person gets prosecuted. And each time a person gets prosecuted, we make a bunch of new enemies. Within 2-3 minutes, the mob could come, a possibility of attack. As BBA became more effective, the forces against them grew stronger. The office was ransacked and burned. Police and politicians were bribed, and mobs were formed to attack activists and take children back to the factory. I was fighting against a social evil, but I was fighting against mafia, criminals, most dangerous people. चलो भगाओ। कौन है? अरे बढ़ाओ, पब्लिक बहुत ज्यादा है। अरे बहुत मार रहा है यार। No, stop. बहुत मार रहा है। उस पे उनकी बहन छुप जाएगी, खत्म हो जाएगा। एटीएम साहब कहाँ है? रतीब कभी। चल। My colleagues have faith in my mission, but they also have faith in my leadership. All of them have heard the stories of Dhumdas, but they still trust me. His colleague Dhumdas was trying to organize a march. When I arrived, it was chaos. Blood on the street. Everyone was crying. And then I found him. I had to carry his body on my shoulder. Dhumdas was beaten to death. Didn't have the courage to answer to his wife.
I still feel that I carry the burden of the body of Dhumdas on my shoulder. बच्चों को जैसे हम कहें कि ये सारा हम खतरे वाली बात नहीं बताते अपने बच्चों को, बीवी से भी छुपाते हैं। टोपी मत उतारना है स्कूल में, हाँ वो छुपाना तो पड़ता ही है उनसे। उनको पीछे का कुछ नहीं मालूम है, वरना वो एकदम डर जाए, जाने नहीं दे। Arshad is like my younger brother. I could see some sort of determination and self-confidence. The leader in rescue operations, because this requires a lot of intelligence, that requires a lot of courage. हमें पता है हम खतरे में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, हमें मालूम है। अपना बच्चा भी फंस जाए तो कौन नहीं अपना सर फोड़वाएगा या जान जोखिम में डाल। Arshad poses as a buyer, so he can get into the factory in hopes of locating Sonu. कैसा खाना है? उधर किधर है? अरे क्या बना रहा है? ये क्या बनाया बेटे? वो तैयार देखिए। समझान ये क्या नाम है? नहीं ये क्या निकल जा रहा है? ये केमिकल है, इसको चुलाना है ना, केमिकल। हाँ बाबा, और ऊपर भी है नहीं? जब काम हाँ ये देखिए, ये है ना, ये सब काम करते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, वो वाला भी, सब। हर कारखाने में बस एक दो आदमी बड़ा है, बाकी सब बच्चे ही हैं सारे। हम लोग शुरू करने वाले काम, कुछ एक सिंपल मिल सकता है? This is the first copy. If you see, क्या चीज़ है? the jewelry box or something like that. If there is a big company, international company. तो brand ये home sense है, ये home sense. My sense is that it cannot be fake. It cannot be fake. I mean, it could be, but my sense is like that. पर आपको वहाँ पे मिला वो बच्चा है, सोनू? श्योर नहीं हम। तो लोग सब बिहार है क्या हो? कुछ जो डायरेक्ट कौन मालिक है, आप हो? ये हो आले रसूल कहीं गए? Before they plan a raid to rescue the children, they want to confirm if Sonu is there. Make sure that the father is contacted. And without wasting time, Sonu's father should come to Delhi. मतलब मैं तुमसे जानना चाह रही हूँ कि तुम्हारे मतलब कैसे लगा तुमको? है पहले दिन बहुत रोते थे ना तुम? आरव? पता नहीं।
मम्मी की याद नहीं आती? आती क्यों नहीं? तुम जब सबसे पहले दिल्ली आए थे, कैसे आए थे? भूल गया मैं। भूल गए? इतनी जल्दी कैसे भूल गए? हाँ बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे मन में एक ख्याल कैसे आया कि मुझे जाके कमाना चाहिए? खुद से। खुद से। क्या मजबूरी है? बहन की शादी करनी थी, पैसे नहीं थे तब आया था बहन। फिर क्या, पैसे कमा कर लेकर जाता है घर तब शादी होती है। बॉल फेंक, बॉल फेंक। अबे यार लकड़ी पे से भागना, ये फिर आ गया। तो वहाँ क्या करते तुम? वैसलीन का काम। और ये क्या हो गया सब में? ये सब गर्मी से निकल गया। गर्मी बहुत थी वहाँ? हाँ? पाउडर के गर्मी से हो गया, पाउडर पता था। पाउडर गर्म चला जाता था? उसका सेट हुआ था ज़्यादा, जहाँ पर घोर होता है वो पंखे हवा से उड़ने लगता है ना। हाँ। चेहरे पे पड़ने वजह से गर्मी बाहर। क्या नाम है तुम्हारा? संजीत। मेरी तरफ देख के बोलो, पूरी बात बताओ मुझे। 1 साल से यहीं हो? माँ बाप के पास नहीं गए? तो माँ की याद नहीं आई तुमको यार? तुझे नहीं आई कभी? आता है कि दीवार हम कब कहा घर भेज दो, नहीं जाने। क्या कहता है? कहता है अभी नहीं जाने देंगे, सीजन है काम। काम के सीजन है, नहीं जाने देंगे अभी। तो रोया तुम? नहीं। याद में रोया नहीं कभी? मिलेगा? हाँ। भरोसा है तुझे? हाँ। कि जाएगा? हाँ। पुराने बच्चों में से कौन गाना गाता है? नारा लगवा पुराने बच्चों में से। आओ यहाँ यहाँ यहाँ। हर बच्चे का है अधिकार। और when the slave children themselves become the spokespersons, the change would be much more sustainable. देखो सबसे पहले एक नारा लगाओ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, हम आजाद हैं, मैं आजाद हूँ, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। चलो चलो ये तो मेरा दोस्त है, काय को रुलवाया ऐसे? आ जाओ इधर आ। यही बना था ना मेरा दोस्त? कौन बना था? मेरी दाढ़ी में किसने हाथ लगाया था? यही। तू लगा के दिखा दोबारा। दोस्त है? दोस्त है कि नहीं है? जाएगा घर में? माँ के पास जाएगा कि अब्बू के पास? इसको भेजने का इंतजाम करो। इसके अब्बू को खबर कर दिए? अब्बू को फोन करो। फोन नंबर किसी के पास है? पैसे में लिखा था तो पता नहीं कहाँ गिर गया। मालिक का नंबर याद है। वो चाह रहे हैं कि उसको फुटेज को दिखलाया जाए, सोनू के फादर को। तो वहाँ कारखाने में 5-6 छोटे छोटे बच्चे हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें कोई सोनू है। If they can identify Sonu in the footage, they'll have the evidence they need to arrest Alia Rasool and seal the factory.
कैलाश है, ये है, देखो एक तो ये था ही नहीं ना है, रुको ये आया, ये रुक बे, ये एक तो नीचे बैठा है, ये वो जो बैठा है वो भी नहीं है। देखो देखो देखते रहो देखते रहो, ये नहीं दोनों में से ये यहाँ तीनों का बच्चा को देखो तो उसका चेहरा तो देखो, तो इसके बगल में बैठा हुआ तीसरा वाला नहीं है। देख लिया, देख लिया पक्का। चलो तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए नहीं है, वो नहीं। बहुत अफसोस होगा, अफसोस नहीं होगा, लड़का है ना, मजबूर है वो क्या, मजबूर साहब फाजिल कुछ कर नहीं सकेंगे सर। इस ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं और कंफर्म करने के लिए आए हुए एसएमएस पर रिप्लाई करें। क्या नाम है इनका? मालिक का रफीक। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ रफीक बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये करीम क्या है, अब्बू का नंबर चाहिए था। हेलो हेलो, ये करेगा। अच्छा, आप संजीत को जानते हो? आप नहीं जानते किसी को? देखिए, अगर जानते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि By law, BBA can't release the children to anyone other than their parents. गार्जियन नहीं देता हो। 046760 है ना? ये करीम के अब्बू का नंबर है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। दीदी एक पर्ची में लिखकर मुझे भी दे दे नाम नंबर। हमारे पास रखा रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ कौन बोल रहे हैं? कहाँ लगाए हो आप? आपका नाम क्या है बताइए? हमारा नाम मोगी है। अच्छा, करीम कौन है आपका? हाँ जी, करीम मेरा लड़का है। आपका लड़का है? हाँ जी। तो करीम इस समय हमारे पास है मुक्ति आश्रम में। तो कैसे मिल पाएगा मैडम, कोई आइडिया बताओगे आप? करीम का जन्म तिथि प्रमाण पत्र वगैरह लेकर के यहाँ जमा करा दीजिए और करीम से मिल के भी चले जाइएगा। लीजिए, बात तो कर लीजिए, करीम से बात कर लीजिए। हाँ दीजिए। हाँ, बात करिए। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोल पापा। हाँ घबराओ ना बेटा, तू चिंता ना कर, ठीक है? ठीक है। एक बोल दो। चिंता उनता ना करे, अम्मा का ना बताए कुछ। अरे बहुत अच्छे से हम लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक। ये केशव नगर में पड़ता है मुक्ति आश्रम। हाँ, आप कहाँ रहते हो? केशव नगर है, नगर केशव नगर। हाँ हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। Reuniting these children with their mothers who lost all the hopes. That is an experience which cannot be told in words. On the other hand, these parents are very, very vulnerable. Parents of these children are illiterate. Most of them are very poor. Children don't see any better alternative than going and helping their families by way of earning something. And that's why when we address the problem of child slavery, we have to address from many corners.
There is a vicious circle between child labor, adult unemployment, poverty, and illiteracy. My faith is that poorest of the poor people, they start believing in education. थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगे ना तो इससे 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे। और जब तुम 18 साल के हो के कहीं नौकरी भी करोगे ना तो कम से कम 10,000 रुपया मिलेगा तुमको महीने का दिल्ली में। पास में है सरकारी स्कूल? लगे ही में है। पास में ही है? हाँ। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं जाते? हाँ? तुम क्यों नहीं जाते? हमें पढ़ने में नहीं मन लगता। नहीं लगता था? कभी गए हो? नहीं। नहीं गए स्कूल? किसी भी कह देता मेरा मजदूरी कर देगा, मैं कर देता। पाउडर के सील लगाता था। पाउडर छिड़कते हैं? हाँ, पॉन्ड्स। हाँ, मुँह में लगाता है। ठीक है। और कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे तक काम होता था। तो 3 बजे तक? हाँ। गाली देता था मालिक कि ठेकेदार? ठेकेदार फूल सिंह के। वो संजीत फूल सिंह से बहुत डर रहा था। हम लोग का बहुत डांटा है काम अगर उससे गलती है। बच्चा काम नहीं करेगा तो छोटे बच्चे को डांटेगा। अच्छा खाना है? पेट भर मिल रहा है? हैं? फूल सिंह को कौन कौन पहचानता है? इसका नहीं, गांव का ठेकेदार है। Phul Singh and Ali Rasool are typical examples of traffickers. Traffickers promise money and a better life. Parents are led to believe that they're doing something good for their child and family. They are offered some money as an advance. An ignorant, illiterate, and poor father can easily be convinced to send his children to work. आले सो कैसा तेल में लगा के काला कर गया। जाने दो पहले, 2-4 महीना रहेगा, उसके बाद आएगा, फिर वहाँ से फिर मेरा पास रहेगा। Human trafficking is the largest organized crime in the world, with annual profits estimated at $100 billion. Kailash realized that he couldn't end child labor by rescuing kids one at a time. I was freeing children from the carpet industry, and a larger number of children were entering into it. The solution of every problem lies in the problem itself. So why can't we approach the consumers? He launched Rugmark, a non-profit that labeled carpets made without child labor. The number of children working in the carpet industry decreased from over 1 million to just under 200,000. But there were still 260 million children working in almost every country around the world. So Kailash looked to his heroes. They were spreading their message by marching and going people to people. Kailash organized a worldwide march to put pressure on governments. Over 15 million people marched across 103 countries. History is witnessing an unprecedented moment today. 180 countries ratified an international treaty against child labor.
आंदोलन का मतलब ही है हिलाना, समाज को जागृत करना। बहुत सारे लोग जुड़ते गए और अलग अलग जगह के लोग भी जुड़ते गए। He continued working country to country to write and enforce laws that protect children. Now, India has ratified a total ban on child labor. Worldwide, the number of children working has dropped from 260 to 152 million. The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for the struggle against suppression of young people and children. If one child is enslaved, then for me, the world is not free. And that is an evil which I want to end in my lifetime. And I will do. I will do. परेशान मत हो, ठीक है? आपके बच्चे को ये मास्टर जी ले आए। कल हम घर से निकले ना, मेरा पत्नी मेरा बड़ा लड़की पैर पकड़ के रो रहा था। हम बेटा बेटे आप आ जाएंगे, घबराओ। तो मेरा आप चिंता मत करो। चिंता मत करो। बचपन बचाओ आंदोलन उसको छोड़ने वाला नहीं है। आपका बेटा सोनू मिलेगा। You just can't imagine that pain the parents have undergone while searching for their children. And we have been given this responsibility by them. They have chosen it, they have actually trusted upon us. We cannot just wait and watch. Now we have to act in different manner. So we have to take a new course of action in finding the missing child. Without any leads, Kailash redirects the investigation to go after Alia Rasool. ये गिरफ्तार होगा तो लड़का रिकवर हो जाएगा। अच्छा। तो सिंपल है तो देखो वो भी कर सकते हो क्या तुम? 1000-2000 का ऑर्डर मिलेगा, 5000 का ऐसे कुछ बोलना। अच्छा। इकट्ठा ऑर्डर होगा। अरे हम राशिद बोल रहे हैं लक्ष्मी नगर से। एक बार उसे विश्वास पैदा करो और इसके बाद विश्वास में आएगा वो तो फिर पकड़ो। मेक हिम फ्रेंड। अरे भाई आपसे मुलाकात को बहुत दिन हो गया, कहाँ मुलाकात करें आके कुछ देखें, काम का ऑर्डर बाहर से लें। If he has slightest doubt in you, then he will disappear. आले रसूल अरेस्ट हो गया तो सोनू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेन ये डर है कि अगर इसने हमें पहचान लिया, आले रसूल जो है उसको कहीं भी भेज देगा, बेच भी सकता है, हटा भी सकता है, क्या करेगा ये नहीं आइडिया है। अच्छा चलिए ठीक है, तो कल हम आपको फोन करके आ जाएंगे। ठीक है, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। ठीक। I'm so pumped that I'm here. This HomeSense has amazing things. Look at the colors. Yay! You're adorable. More gold, more sparkle. अर्षद जी, हैं? ये देख रही थी HomeSense वाले वीडियो जो हमारा उसका वो था। Look at the pretty burlap bags. Wow. खुद ही वो ले रही है वीडियो, शॉपिंग करने आई है, वीडियो ले रही है। This is like winter wonderland. एक बार हम लोगों The team is unsure whether they've found an authentic brand label. Most major brands label their products in other countries to avoid detection during raids. HomeSense का ये नाम देखे, यहाँ पे भी ये ना डिपार्टमेंट में सब कुछ वही है सेम। Well, hey guys, I went to HomeSense tonight and I found some stuff. Saving is believing. That's a low price! Everybody likes to save money. But as our thirst for cheaper and cheaper goods has grown, Western companies look for more affordable manufacturing so they can stay competitive. $7.50 per skirt. Much of that saving comes from outsourcing labor. It's so cheap I have to buy it.
In the US, minimum wage is $7.25 an hour. On the clearance rack for $10. In France, it's $11.22 an hour. China, 87 cents an hour. Child labor is free. हमारा मालिक कैसा था और खाने पीने में क्या क्या देता था? दाल भात बस बस। नहीं तुम भी खाते थे गोश्त? नहीं। और नहीं तो अंडा बनता था। अंडे और गीत? कुछ नहीं। पगार कितने के दे रहे थे? पगार? हाँ नहीं पता मुझे। यानी कि महीना में कितने रुपया देते थे आपको? अभी महीना ही नहीं पूरा हुआ तो कहाँ देगा। तनखे कितने हैं? नहीं पता मुझे। पैसे तुम्हारे हाथ में देता था। अभी तो हमारा पास एक भी रुपये नहीं दे। तू कितने घंटे काम करता था? मैं हाँ। 7:30 बजे 12:30 बजे रात। सुबह से रात तक यार? सुबह इतना छोटा बच्चा और सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक यार, ऐसे कैसे हो रहा है? लम्बा गोड़ लगे। हाँ बोल। नंबर अब दखिन केते दिन में आयो एभी तुम्हार तब ना हमर फोटो आधार कार्ड आर ले के एभी तब ना ले के गलो से के गले अति फुल सिंह के भाई ताइल जीरो आधार कार्ड के पहचान पत्र के सब ले के गले। जो दरभंगा के बच्चे हैं, जिस गांव के बच्चे हैं, उस गांव के प्रधान आए हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के, ठीक है। तो मतलब मेनली कॉमन सब बच्चों से मिलने आ रहे हैं वो, मतलब सभी बच्चों को देखने आ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जा सकते ना। बच्चों के माँ बाप का आना जरूरी है। प्रधान अकेले थोड़ी 20 बच्चों को लेके चला जाएगा। मतलब जैसे मान लो किसी बच्चे के मदर फादर अवेलेबल नहीं है या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवेलेबल हो, हम वेट कर लेंगे जब तक वो हो। ऐसा तो नहीं है ना कोई अपने बच्चे को लेने नहीं आ सकता। अपना जी मैं 1 घंटे में वही मुक्ति आश्रम में आप प्रधान हैं? अपना आई कार्ड वगैरह दिखाइए। और बच्चे के साथ ये बच्चे का जन्म तिथि वगैरह कुछ लाए हैं? कितने बच्चों के कागजात लाए हैं आप लोग? ये है फूल सिंह वाले। Who brought these documents? प्रधान और प्रधान। And where is प्रधान? बेचन माझी जो बाहर कर रहा है, संजीत सदा। तो बात हुई तो फिर इसने अपनी मम्मी को बोला कि भाई मेरे आप आधार कार्ड और ये लेकर आ जाइए और तब मैं आपके साथ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो फूल सिंह है ठेकेदार, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे आधार कार्ड लेके जा चुका है। ओह। हाँ। नमस्ते। आप हैं प्रधान जी? चलो 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 बैठो बैठो। बहुत अच्छी बात है कि तुम आए, तुमने चिंता की गांव के गरीबों की। अब फूल सिंह कौन है? तुम्हारे साथ पढ़े हैं या बचपन के दोस्त हैं? कैसे तुम्हारी दोस्ती हुई उनसे? उनसे दोस्ती नहीं हमारी, वो गांव के है तो समाज में तुम रहते हैं। हाँ। क्या काम करते हैं फूल सिंह? फैक्ट्री में काम करते हैं, उसका बनाते हैं सेंट सुल्का को, उसका बोरलिंग सब ये वैसे। बार तो ऐसा हुआ कि फूल सिंह के साथ बच्चे आ रहे थे वहाँ से। जी मुझे जानकारी इस बात की नहीं है, देखिए आते हैं, लेकिन जब वहाँ से लेबर लेके तो आते हैं। नहीं है सर, हम लोग को वहाँ मतलब आपको 15-16 साल का बच्चे छोटे लेंगे, क्योंकि इतना तो पौष्टिक आहार मिलता नहीं है। देखो कि 18 साल से नीचे के बच्चे को लाना बहुत बड़ा अपराध है।
हमारे नाम सवाल ही नहीं पैदा होता है चलेगा। क्या है दोबारा से वो पुलिस वाला कि तुमको सामने कर दूं, तुम्हारे हवाले बच्चे हो जाएं जो कानूनी तौर पे होंगे नहीं। तो ये कागज कैसे आ गए? ये सर फुलेश्वर ने दिए? फ्लेसर नहीं दिए। तो फ्लेसर नहीं इसने तो नहीं दिए? जी। इसने तो नहीं दिए। ये कहाँ से आएगा? पुलिस वाले दिए, मैडम को पूछ लीजिए। सामने पुलिस वाला दिए। ये पुलिस वाले से उसकी दोस्त जान पहचान है अच्छी, फूल सिंह की। लोकल पुलिस को भी लोग पैसा दे देते हैं। BBA coordinates with police to conduct rescue operations. But sometimes they are bribed by traffickers and factory owners. There were hundreds of times when I went to rescue some children. And the police is a good friend of the trafficker and the slave master. They pass on the information and the children are removed. In 2004, Kailash went to rescue a dozen girls who were being held as sex slaves in a traveling circus. The circus owner was a hardcore criminal. Broken hand? We really don't know. Let's broken leg. We need to go immediately. The raid failed. And all these girls were taken away. We have to look for the rest of the people. Where are the mothers of the children? Kailash went on hunger strike in an attempt to free the girls. On the second day, they started threatening my daughter. The traffickers gave him an ultimatum. Give up the hunger strike, or your daughter will meet the same fate as those girls. She would be branded with iron rods, gang raped. We were worried. But these girls who were trafficked to work in slavery have only hope in me. On the sixth day, Kailash's kidneys started to fail. I was willing to die. When the people saw on television, it inspired ordinary people in different parts of the country to demand the government stop the shows of children in circuses. The High Court took action, and all the girls were freed.
But the threats to Kailash's daughter continued to escalate. For her own protection, Kailash sent her to stay with friends in the US. I used to go in my daughter's room. She was not there. Sometimes I feel I did good, but I'm not sure. हाँ, ठीक है। सब बैठो माँ, गुलाई में बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर भी बैठो, इधर भी आ जाओ, इधर निकल के आओ, इधर निकल के आओ। In a few days, parents will arrive and they will have a choice to make. Many will want to send their kids to school, but they are still financially desperate. आगे रहेगा। जो बच्चे आके पढ़ना लिखना चाहेंगे, अपनी जिंदगी बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं? जो गांव में गरीबी है, सब लोगों को नया नया अच्छा अच्छा सपना देखना चाहिए, आगे बढ़ने का सपना। वो आ सकता है फ्री में, हाँ। यहाँ आप कहाँ पर हो? आप कौन सी जगह पर हो? आले रसूल खाना खिलाएं? रख लो, यहीं रखो। लिया, देखो ये बना चुके हो कि नहीं इसमें कि नया है? ये तो ये सेम बन जाएगा। अच्छा, ये भी सेम बनेगा। गारा के क्या बनाते थे? गला में जैसे ये है ना, ये देखिए जरा, ये जैसे ये हो गया, ये गला को पकड़ लीजिए, गला समझ लीजिए, या नहीं तो फिर यहाँ से एक करके यहाँ ऐसे लगा दीजिए। अभी आपको कितना पीस बना के देना है हमें? अरे बस एक एक दो दो चार चार दे दो, सिंपल के लिए, और क्या। चाहोगे तो कारखाना दिखला देना, देख लेंगे। आज उधर से ना? हाँ, उधर ही जाना है हमको। In order to arrest Alia Rasool and find Sonu, BBA must coordinate with police and catch him in the factory while kids are working. अरे यार, ऐसे रास्ते से ला रहे हो कि रास्ता यही कि दूसरा भी है? इधर से आसान है। अच्छा, अच्छा, इनको किसी लड़की ने दिया है क्या जो हाथ में पहने हुए हैं? ये पहले तो अपना सब देख लो कैसे बनाया था कि आपको भी समझ में आएगा नहीं। तो फिर अगर हमको मिलना चाहें तो आपसे कै बजे मिलेंगे? मंगल को जा रहे हैं गाँव। ये तो कह रहे हैं मंगल को जाएंगे। मंगल को परसों। अच्छा। With Alia Rasool leaving in 2 days, BBA must move quickly to plan a raid. ये ट्यूसडे को जा रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, मंडे वनडे बस। एक पहाड़ा सुनाओगे मुझे कोई भी? सुना दो। 4 एकम 4। अब चटके 4 4 दुनिया 4 3 12 4 6 16 4 5 20 4 6 24 4 27 28 4 32 4 9 36 4 धन 40। दो कितने 6 7 है? अच्छा, घर जाके क्या तुमने क्या बताया था? तुमको क्या बनोगे घर जाके?
क्यों डॉक्टर क्यों बनोगे? क्यों? क्या करोगे डॉक्टर बन के? तो इलाज करूँगा। किसका इलाज? मेरा इलाज करोगे? हैं? पक्का? लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो। और लेकिन तुम पक्का जब वापस आओगे तो क्या बनोगे? डॉक्टर। भूलना नहीं। ठीक है? चलो। बाय। ठीक है? डन? एकदम डन है ना? यहाँ खाने भी मिलता है अच्छा है, सोने भी के लिए अच्छा है, घर जाने का मन नहीं कर रहा। पढ़ाई करेगा ना, मजा आ रहा है कि नहीं मजा? अच्छा चलो ये बताओ, यहाँ मजा आ रहा है कि मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? दिल्ली में तो नहीं खेलते थे, यहाँ तो खूब खेल रहे हो। चल उछल के खा रहे हो, देखो पेट देखो, उछल के दिखा, उछल के दिखाएगा, उछल। अभी गाना गाया हूँ। अभी ये नक्शा है जी सर। एक जो आले रसूल और उसके ऊपर वाला है, यहाँ पे जैसे उसने बोला 20 के करीब इसमें है, 20 इसमें 30 हो गया। और यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, If the local police is connived with them and the local police informs, then where they can remove the children? इधर से आसान है। तो ये पूरा एरिया भी कवर हो जाएगा और भागने के चांसेस भी नहीं होंगे। Without wasting time, swiftly find the children there. चलो ना सबको आगे निकालो ना सबको। चलो 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 जल्दी घुसो तुम लोग यार, घुसो, जाओ अपनी अपनी गाड़ियों में घुसो। आगे। It's a child, and child's father is sitting with us. He has only hope in us. अरे क्यों रुकवा दिया यार? रोका किसी कहने से? चलो बस रुक। इतनी देर में क्या है बस? जल्दी चलो। अर्शद जी आप खतरा मोलते और कुछ नहीं, ये एरिया भी तो सेफ नहीं है यार, ये लोग। जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ, तुम लोग उसके साथ जाओ। चलो एसडीएम ऑफिस, दौड़ जाओ। पुलिस वाले, अरे मेरे पापा क्या हो रहा है? जब कुछ है नहीं तो बंद क्यों कर दिया? लेकिन अभी तो हमें नजर आ रहे थे। क्या इन लोगों बच्चों से? नाम का एक लड़का था बेटा, वो कहाँ है? सब इस पर आ गए। रुको, इस वाले पर आ जाओ भाई, इस पर आओ, ऊपर इस पर आओ यार, इस बिल्डिंग में आ दोनों में। कहाँ है? आ जाओ बेटे, डरो मत। चुप चुप भाग जाते तुम। अरे करे तो कोई नहीं है, इतनी देर तक दरवाजा बंद के भागो। अरे इधर इधर, हेलो हेलो, जस तख्त के नीचे लो, वो तीनों को ले लो। रुक जाओ यहीं पे। अरे रसूल कहाँ है? बाहर गया। कहाँ बाहर गया हुआ है? चलो आप निकलो। क्या लोग हैं बेटा?
सोनू मिला स्वाति? नहीं। Today we have freed 45 children. That is not enough. He is not a number. He is a boy who is breathing, he is having heart, and he has parents. So it's frustrating. ठीक तो है देखो। ठीक है। जाने क्या है? ठीक है ये। है कि नहीं? BBA has persuaded the government to pay all rescued children $5,000 plus back wages. But it can take months for these payments to clear. अच्छा देखो, आज आपका बच्चा घर जा रहा है, आपको पता है हम आपके बच्चों को यहाँ से घर भेज रहे हैं। क्या आप अपना बच्चा यहाँ से स्वस्थ हालत में लेके जा रहे हो, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा दोबारा बाल मजदूरी नहीं करेगा। करेगा तो आप जिम्मेदार होगे, ठीक है, और करोगे तो फिर आपको उसके लिए सजा भी होगी, ठीक है। गलती हो गई है, ये दोबारा अब ऐसा कभी नहीं दोबारा होगा। हाँ जी, देखो मिस कॉल है रसूल की। क्या किया जाए? और बताओ क्या चल रहा है? आप उस दिन आए तो सैंपल दिए तो उसी टाइम से आपका माल पे लगे हुए थे। क्या हुआ क्या था? ये बच्चा खो गया था मेरे कारखाने से रमजान में। तुम्हारे कारखाने से? हाँ, उसी का बाप एसडीएम और रेंज वाले को लाकर रेड मार दिए थे, बच्चे पकड़ा दिए थे। तो क्या वो जो अच्छा जो बच्चा गायब हुआ तो उसी चक्कर में हो गई? सुनू नाम है सोनू। सोनू तो कहाँ चला गया? कहाँ कैसे कहिए कहाँ से गया, वल्लाही बता जाने। किस बात पर गया, क्या हुआ, कहाँ होगा, कुछ आइडिया नहीं है? नहीं मालूम। अब ऐसा क्या मामला शांत हो गया। इनका माल देखिए आप यहाँ पर रखे इसको। कैसे क्या हो गया, कैसे शांत हो गया, कैसे शांत हो गया मामला? 1 लाख रुपए दिए है पुलिस को। नहीं जुगाड़ उगाड़ नहीं कुछ किया था पुलिस से? सेटिंग था बीट ऑफिसर जो है ना वहाँ का हम लोग का एरिया का, हर को हफ्ता देते हैं। अच्छा, अगर इसका बाप कोर्ट में चला जाए तब क्या होगा मामला? अब कोर्ट में जाने से भी नहीं होगा ना। कैसे? जैसे बच्चा खो गया मेरे कारखाने से, ठीक है, उसको जो पैसे मिल गया इसके बाप को दिया, उसे ले लिया, लिखा पढ़ी हो गया तो फिर क्या करें? चलो ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा, बताओ। बताओ तो शुरू से। लड़के को आने के कितने दिन बाद आए थे यहाँ? हाँ, मतलब 15-20 दिन के बाद। और मिल गया? हाँ। अच्छा। तो ये लड़का जो है, दो चार बातें बताओ। हाँ जी। आले रसूल तुमको कितनी बार मिला पहले, बच्चे को लाने से पहले? आले रसूल कितनी बार मिला? नहीं देखे हम, सिर्फ एक ही बार देखे खाली दिल्ली में। तक उसने पैसा दिया? सुनिए,
तो वहाँ से मतलब पहुँच गए तो कितना पैसा दिया? आज 2000 रुपया दिया हमको दिल्ली में। जब तुम्हें पैसा प्यारा है, लड़का प्यारा नहीं है, तुम 2000 रुपए तुम्हारे हाथ में मिले और तुम चले गए। बहुत बहुत ज्यादा मुझे संभावना लग रही है कि लड़का भाग गया और आले रसूल को भी पता नहीं है, आले रसूल के हाथ से गया वो। I am up against so many odds. Against so many odds. अरे एक बच्चा सोनू गायब है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। क्या भाई यहाँ पे बहुत आए ना खोए हुए बच्चे। अच्छा। Either he is held in slavery somewhere or he's been killed. आए घर पर तो कोई पढ़ाई तो हम नहीं किए, सिर्फ काम करते। काम करने 7 बजे जाते थे तो ईंटा बनाते थे। I've always met desperate mothers, fathers. I have seen corruption. ये क्या बन रहा है बेटा? I have seen injured children with broken spirits. But I have also seen that change is possible. I have seen children who lost their hopes, but now they are freeing other children. Desperate mothers sending their children to schools. I'm not going to stop fighting for changing the laws, but we cannot end child labor unless we all demand it. I am angry about it. Be angry against slavery and think, and then act. Kailash is launching a campaign called 100 Million for 100 Million, connecting young people who are looking for a way to help with the victims of child labor. So 100 million young people in schools, colleges, universities can be the voices for the cause of those 100 million left out. What if all of us said, no, we are not going to buy and use your goods if they are produced by child slaves? So do you want to be a change maker for those children in the world? Yes. Then raise your hands. One out of 10 are working in child labor. But that means 9 are not. If the world has moved to bring 9 children to freedom and education, why can't one who is left out? आजा जल्दी आ दौड़ के चला जा दौड़ के पास तो बहुत जोरदार कम सामान आ गया। चल खुश है? स्कूल जाना है? आश्रम में रहेगा ना? पढ़ाई लिखाई करेगा? If we are able to protect this generation, the next generation will protect all the generations to come in the future. Childhood is not an age.
every child is born to be free. Free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school, free to grow, free to touch the sky. If you see any kind of atrocity and abuse and exploitation of any child anywhere, break the silence. Stand up. March with me. March with me. March with me. कि नहीं हो अभी? तो जोर से बोलो। आजाद हूँ। और जोर से बोलो। आजाद। गुरु मास्टर जी बढ़िया हो गया ना? हैं? आप आए? अरे? रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। Our foundation is creating a world where every child is free to be a child. Hi, I'm Derek Doneen and I directed this movie. You can support the Kailash Satyarthi Children's Foundation and provide children with a path to freedom. Please do so by clicking the blue donate button. And share this documentary to join our movement. शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है जीवन में। वो देश का अच्छा नागरिक बन सकता है उसकी शिक्षा अगर हो। Je pense que ce qui fait que certains enfants aiment à l'école, c'est parce que l'école c'est une aventure et qu'on y vit des choses.
Ah, au fait, l'éducation, c'est quoi? C'est quelque chose qui amène l'enfant à grandir socialement. Un enfant qui n'est pas éduqué ne peut pas être heureux dans la société. De façon générale, on tend à vouloir de plus en plus former des travailleurs et on cherche un peu à laisser de côté le développement de la citoyenneté puis de la culture. Si yo sigo pensando que la escuela es el edificio, tengo un problema. La escuela tiene que generar territorio más allá del edificio. Every day, around the world, millions of teachers start their day with the same passion for their job. They have the firm belief that with dedication, they can improve the society they live in, one student at a time. We have asked them to share with us their in-depth experience and their vision of quality education. Je suis Madame Passagou Pulchéry, j'enseigne le français. J'enseigne depuis 8 ans. Je suis enseignante au lycée Ejranaoui. Mes élèves ont l'âge de 10 à 16 ans. J'interviens dans une école officielle, école publique. Donc dans cette école, la majorité des enfants viennent des familles très pauvres. C'est des enfants, quelquefois, qui n'arrivent même pas à payer le collège. L'école n'est pas gratuite à ce niveau. C'est au primaire que l'école est gratuite. Mais au collège, les filles payent 10 000 francs et les garçons, je crois, au-delà. Nous allons commencer par le contrôle de présence. Qui est absent ici? En récréation, chaque enfant doit venir avec 50 francs ou 100 francs pour pouvoir s'acheter du gâteau, ou bien de la bouillie, ou bien du pain. Donc cet argent, c'est le parent qui doit procurer cet argent à son enfant. Si les parents n'ont rien pour leur enfant, donc toute la matinée, l'enfant reste sans rien manger. Bonjour tout le monde. Donc vous avez fait circuler le message? Oui. Ok, c'est bien. Je m'appelle David de Coster, j'ai 41 ans. J'enseigne depuis 17 ans à l'école Claire-Vivre des Verts à Bruxelles. C'est une école communale Freinet. Et j'ai une classe de 22 élèves qui ont tous entre 9 et 10 ans. Est-ce qu'il y a des enfants qui voulaient prendre la parole au Quoi de Neuf ce matin? Et moi, je peux faire une poésie, David. Moi aussi. Il y a d'autres poésies aujourd'hui? Il y a Lucas. Emma, Christian. Ok. En quelques mots, la pédagogie Freinet est une pédagogie qui décide de rompre avec la scolastique. C'est une pédagogie qui vise, qui essaye de faire tendre les enfants vers toujours plus d'autonomie. Nous avons mangé des gâteaux aux carottes et au citron. Aux citrouilles. Aux citrouilles. C'est un modèle où on respecte les différences de rythme. C'est un modèle où personne ne va être stigmatisé parce qu'il est le plus mauvais, où personne ne va être mis sur un piédestal parce qu'il est le meilleur. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de premier de classe, il n'y a pas de dernier de classe, il n'y a pas de cancre. Il y a une multitude d'enfants avec une multitude de facettes, avec une multitude d'origines, de savoir-faire, etc. मैं शर्मिष्ठा शर्मा और मैं इस स्कूल में करीब 7 साल से पढ़ा रही हूँ। ऐसा मेरी क्लास में 23 बच्चे हैं। मैं फर्स्ट क्लास को पढ़ाती हूँ और उसमें 23 बच्चे हैं और उसमें सभी ऐसे मतलब थोड़े गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, सभी आते हैं। 15 लड़कियाँ हैं और बाकी के लड़के हैं। 8 लड़के हैं और 15 लड़कियाँ हैं क्लास में।
स्कूल में आके वह बच्चों की पहले वो होती है, प्रेयर होती है, उसके बाद अटेंडेंस होती है, उसके बाद हम लोग अपनी अपनी क्लासों में चले जाते हैं। ये शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है यहाँ पर, और यहाँ पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है, किताबें बच्चों को दी जाती हैं, भोजन भी दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, और यूनिफॉर्म भी दी जाती है बच्चों को। Mon nom est Julie Martineau. J'enseigne le français en 5e secondaire à l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay, au Québec. J'enseigne donc à 3 classes de 5e secondaire, des classes d'environ une trentaine d'élèves. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Je vais bien. Moi, j'essaie beaucoup de travailler l'ouverture culturelle, mais pas juste nécessairement à autrui, mais la curiosité culturelle à travers la littérature, à travers des questionnements moraux aussi, là. Qu'est-ce qui est intéressant des personnages? Est-ce que c'est leur description physique? Non, mentale. Oui, c'est l'intériorité qui est intéressante. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie des élèves dans leur enseignement. Je suis pas une personne, par exemple, qui va donner beaucoup de cours magistraux, mais je leur donne des pistes et je les fais chercher. Et je trouve que lorsqu'on est actif dans notre apprentissage, ça nous reste de façon plus approfondie. Mi nombre es Javier Iriarte, actualmente soy profesor de formación ética y ciudadana y a la tarde me desempeño como vicedirector de la escuela. Buen día. Esta escuela, la escuela 2 del Distrito 4, que se llama Trabajadores Gráficos, y está en Barracas, en Buenos Aires, es una de las 8 escuelas de reingreso y que tiene como mandato fundacional recuperar a esos pibes dentro del sistema educativo, una educación de inclusión y de calidad. De grupos tienen el texto, acá hay un texto más una guía, ¿sí? Una guía de trabajo. Es una escuela de pequeña escala donde conocemos a los pibes, no tenemos 5.000 alumnos, ¿no? Tenemos 300 y los miramos y sabemos quiénes son. Son pibes que vienen de zonas muy vulneradas en sus derechos, que viven en barrios periféricos, villas miserias. Cuando el director los recibe el primer día de clase, les dice que la única obligación que tienen es inventarse un proyecto de vida. There is something universal in the experience of teaching, independent of the different contexts and realities that each educator is facing. Taking into account the amount of resources available, one thing is for sure, teachers will always do their best to provide the best education to the children entrusted to them. Connaître en réalité les noms de tous les élèves, c'est difficile parce que dans une salle de classe, nous avons plus de 103 élèves, 105 élèves. Donc, vous dire que je maîtrise tous ces noms, c'est un mensonge. Les enfants sont assis à 3 par banc. Ça c'est stressant. Ils ne sont pas à l'aise. La position du cahier, comment il va poser son cahier, écrire tout ça là, c'est difficile. Regarde comment elle a fait. Tu vois son cahier? Tu as vu? Au moins, elle a mis vocabulaire, elle a mis la date, elle a mis un test, la part d'union. Ces effectifs de masse là, en réalité, ça affecte tous les élèves. Bon, les meilleurs s'en sortent, mais les moyens et les plus faibles n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que d'abord, quand on fait le cours, on ne donne pas la chance à tous les enfants d'y participer, puisqu'ils sont nombreux. Ça n'arrange ni l'enseignant, ni l'élève lui-même. Mais qu'on ait un bon conseil de classe. D'accord, ça va. Donc veillez à ce qu'il y ait des sujets dans la boîte. Ok, ça va.
à 8h30, quand la cloche sonne, je retrouve mes élèves près du saule pleureur qui est devant mon bâtiment. Alors on se dit bonjour, ils sont déjà tous pleins de questions. On va chercher, c'était dans une pile, ça arrive. Dans notre école, comme dans beaucoup d'écoles Freinet, la participation des parents est vraiment un enjeu assez fondamental. Il faut vraiment les faire participer. On a besoin, vraiment un vrai besoin d'eux, notamment pour l'acquisition de la lecture, où les enfants sont amenés à lire leurs textes tous les jours. नहीं, मेरा शुरू से ही ये था कि मैं टीचर बनूं। मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं टीचर बनूं और मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए मैं इस लाइन में आई। हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था उस पर हमारी मतलब 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद हमें बीच बीच में ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है तो हमारा अब 2nd सेमेस्टर चल रहा है, मतलब दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। हमें 6 माह हो चुके हैं और अभी दूसरा सेमेस्टर हमें चल रहा है, तो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रेन करने के लिए। और इससे हमें ये होगा कि मतलब हम जो जैसे आप शिक्षा मित्र जब हम लगे थे तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग फर्स्ट और सेकंड के लिए ही लगे थे। फिर हम लोग पूरे उसको पढ़ा सकते हैं, पूरे उसको क्लास को देख सकते हैं और इसमें फिर परमानेंट एक सहायक टीचर के तौर पर हम लोग यहाँ आ सकते हैं। हाँ जी, 1 महीने में एक बार और 1 महीने में 6 दिन की हमारी कार्यशाला होती है वहाँ पर ट्रेनिंग में। हम लोग आके फिर शाम को अपना घर का वर्क करते हैं, रात में आके अपनी पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ से हमें वर्क मिलता है वो वर्क कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो इससे हमें भी बच्चों को भी फ़ायदा है, उससे हम लोग उससे बच्चों को बता पाएंगे सही ढंग से। Alors, pour la présentation orale, vous avez à trouver des extraits dans votre roman en fonction de certains critères. Quels sont ces critères-là? Et au Québec, on a une grande proportion d'écoles internationales. Chez nous, ça a servi à concurrencer l'école privée. C'est un programme où on cherche à développer des citoyens ouverts sur les enjeux internationaux, donc sensibles aussi à la réalité interculturelle. Ils vont vivre de l'enrichissement, entre autres en littérature, langue maternelle, enrichissement littéraire et enrichissement aussi linguistique, parce qu'ils vont apprendre une 3e langue. Généralement au Québec, c'est l'espagnol, mais ça pourrait être une autre langue. Pourquoi c'est intéressant l'intériorité des personnages? Parce que le pays va avoir des thèmes, la culture du pays va avoir des thèmes. La culture, les événements politiques, l'époque va avoir un impact sur l'intériorité du personnage et c'est pour ça que c'est intéressant. La vie étudiante est très importante. Il y a des activités culturelles, des ateliers, des équipes sportives, donc ça a un impact assez important aussi dans la vie de l'école. L'élève qui est dans une équipe sportive ou qui est dans un comité culturel, ça le motive à venir à l'école puis à faire sa journée de classe pour ensuite pouvoir participer à son activité. Entonces, un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada. Y son pibes que cargan el estigma del fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso de un sistema educativo, pero el envase de ese fracaso es ese pibe. Y la imagen que se empieza a armar sobre sí mismo en términos de fracaso. Esto acá se destierra. No aparece esa figura. Se trabaja muchísimo en la autoestima y desaparece la figura del repetidor porque los alumnos promocionan y asisten por materia como en la universidad, con lo cual el alumno siempre está avanzando, recursa a una materia pero sigue avanzando en otra y esto impacta fuertemente en la autoestima de los pibes que vienen de escuelas donde por 3 materias mal repitieron y tienen que volver a hacer 11 materias. ¿Con qué tiene que ver? ¿Es una opinión? ¿Es una cuestión? Es una realidad. Es una realidad, ¿no? Perfecto. Most of us would agree that access to quality public education is essential for developing our communities. Schools contribute to train future workers, but more important, to cultivate more complete human beings. But what do we mean by quality education?
Pour moi, je considère que l'éducation, c'est un droit humain, c'est un droit social et qu'il faut que l'État fasse tout pour pouvoir éduquer tout le monde. Parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. L'école doit transcender la société. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont prouvé que l'école, en général, depuis certainement 30-40 ans, n'est plus un ascenseur social. L'école maintient les gens dans leurs conditions, dans leur milieu de départ. शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे जो है मतलब वो देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। वो कमाने जब होगा तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा और मतलब अच्छे काम करके अपने बच्चों को भी प्रशिक्षित कर पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और जैसे पढ़ा हुआ जो इंसान है वो मतलब इस तरह से बात करेगा कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। Teachers obviously play a key role in achieving quality education. They invest a lot of energy helping the children to be prepared for adulthood. Yet, they feel their work is not always recognized to the fullest extent. Un enseignant de qualité pour moi, c'est un enseignant d'abord qui doit avoir un bagage intellectuel suffisant, qui doit avoir une conscience professionnelle. Qui va essayer de nous expliquer le mot équitable? Équitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste. Très bien, ce matin-là, pas encore. Une éducation de qualité pour moi, c'est une éducation où l'enseignant lui-même se sent à l'aise. L'enseignant lui-même doit être bien motivé. L'enseignant lui-même doit être considéré par son employeur. Il doit être satisfait de ce que son employeur lui fait. Et partant de là, il va donner le meilleur de lui-même. En Belgique, il y a un vrai problème de valorisation de la profession. Donc il y a des problèmes multiples qui ne sont sans doute pas les seuls problèmes de la Belgique. Mais c'est une profession qui n'est pas très valorisée parce que le salaire n'est pas forcément très élevé. Les conditions de travail ne sont pas optimales. On est de plus en plus dans une société de la consommation et il y a une certaine catégorie de parents qui nous considèrent comme un bien de consommation. Si vous avez fait un peu de recherche sur le contexte de création, est-ce qu'il y en a qui ont fait quelques recherches? C'est un peu étrange l'image qu'on a parce que moi, j'entends souvent dire « moi, je ne le ferai pas ton travail ». Mais en même temps, c'est donc facile de critiquer parce que les gens sont tous passés par l'école. Ils ont tous une idée de ce qu'il faudrait que ça soit un prof. Le métier d'enseignant mériterait d'être mieux valorisé parce que ce n'est pas un métier nécessairement facile. C'est un métier important socialement, d'après moi. Ça, c'est des types de tons, ironiques, dramatiques, oui. La clave de la pedagogía es que no sea una ciencia cerrada, como un conjunto de prescripciones instaladas en lo que debe ser. No, la pedagogía, como la filosofía, es un volver a pensar, a revisitar lo que hacemos. Si pensamos que lo pedagógico es de manual, estamos condenados a repetir. Por eso no puede haber un rol docente en todo el mundo. El docente tiene que armar su escenario de trabajo mirando a su comunidad. Un docente que resigna eso acepta repetir sin pensar. Si la pedagogía renuncia a ser un conjunto de dogmas, vamos bien, porque nos permite volver a pensar todas las tensiones que aparecen en el campo educativo. Schools often reflect the community around them. For this reason, they should be diverse and inclusive. Teachers understand that they can take the lead in transforming their environment positively in collaboration with the people concerned. Je pense que c'est une erreur de considérer que parce que la société est pétrie de compétition, il faut déjà développer cette compétition chez les enfants. Je pense que la compétition et le développement de la compétitivité à outrance, c'est un symptôme d'une maladie sociétale. Oh, j'ai étudié pour rien. Non, tu n'as pas étudié pour rien parce qu'il y aura la dictée que tu as étudiée, on l'aura vendredi prochain. Ouais. L'organisation de la société, c'est quand même une organisation qui ressemble plus à une fourmilière
qu'à une colonie d'abeilles qui seraient solitaires et qui logeraient chacune dans leur petit trou isolées les unes des autres. Pourquoi l'école ne partirait pas de ce constat-là? Dans un système coopératif où on échange, où on brasse, où on mélange, il y a forcément de l'amélioration à la clé pour tous, les plus faibles comme les plus forts. En ese punto hemos empezado a elaborar el tema del racionamiento. Para que la educación sea de calidad, entendemos que es una educación donde todos los que participamos, incluyendo a los pibes y a la familia de los pibes, tengamos posibilidad de decir cosas al respecto, de qué es significativo que transite en la escuela, que se pueda decir en la escuela, desde las disciplinas que propone la escuela en cada una de sus materias, hasta el acompañamiento del mundo de los adultos. There are plenty of obstacles on the road to quality education for all. The lack of resources might be the most decisive one in most parts of the world, but also the lack of political will to put in place policies that guarantee this right. Nevertheless, on a daily basis, teachers try as much as they can to overcome these difficulties, keeping in mind that the students are the ones who suffer the most from these problems. Ce ne sont pas des salles de classe, quand vous les voyez, c'est comme c'est fait pour élever des animaux, mais c'est là que nous faisons le cours. Et quand il pleut, on ne s'y tient pas. Les tôles sont trouées, donc quand la pluie tombe, vous recevez l'eau à l'intérieur, mais vous êtes dans une salle de classe. Et vraiment, il fait chaud dedans, ce n'est pas aéré. Sur 80 élèves en troisième, à peine 4 ou 5 ont le livre qu'il faut pour la lecture. Donc nous, en tant qu'enseignants, sommes obligés de tirer certaines pages du livre, de photocopier et de faire des fascicules pour les enfants. Il n'y a pas de matériel. नहीं, मैं सोचूंगी हम अगर अपने सपनों का स्कूल सोचे तो हम सोचेंगे हमारे स्कूल में हर फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे बच्चे को हर सुविधा मिले। जैसे यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जो है उनके अकॉर्डिंग उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। हम ये सोचेंगे अगर देखो बच्चों जो मैं लिख रही हूँ ना उसे मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है? कुछ बच्चे इनमें बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे निकल सकते हैं, लेकिन कुछ सुविधाओं का अभाव होते हुए जैसे यहाँ पे 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, खाना दिया जा रहा है, बुकें दी जा रही हैं, लेकिन आगे चलकर जो है बच्चा खुद ही मेंटेन करते हैं, सब पेरेंट्स खुद मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं अवेलेबल कर पाते बच्चे को हर चीज़ नहीं। On dit ça coûte cher l'éducation, ça coûte cher la santé, donc mais c'est quand même des services essentiels à une population pour dynamiser une société, pour rendre une société viable. Quand le lion va prendre le lièvre, la gazelle, tout là pour lui, est-ce que c'est juste? Non! Je pense qu'il y a des défis à relever pour avoir une école de qualité. Au niveau de l'infrastructure, il faudrait qu'on essaye de voir les établissements, construire de nouvelles écoles pour désengorger le trop-plein. Du côté structurel, il faut des réformes. Les programmes sont les mêmes. C'est vétuste, on ne change rien, c'est le même programme. Si on pouvait aussi changer les programmes un peu, adapter les programmes à la réalité actuelle, ça nous aiderait, ça aiderait aussi nos enfants. Bon, au niveau personnel, il y a toujours manque de personnel. Les enseignants sont en nombre insuffisant. Donc il faudrait qu'on recrute des enseignants et qu'on leur donne réellement une formation. Parce que ce qu'on nous donne comme séminaire en 2 jours, je pense que c'est une formation bâclée. En réalité, ce n'est pas une formation pour qu'un enseignant puisse donner un cours à ses enfants. In the last decades, some people have thought that education could and should be organized according to the logic of the market like other consumer goods and services. It was believed that the learning process could be regulated by the invisible hand of the market and that it would result in a cost-effective product that meets the same quality standards. Teachers are well placed to testify on the disappointing consequences of the policies implemented with this logic. C'est une manifestation qui se passe le 17 octobre 1905.
Depuis quelques années, on a vu apparaître les conventions de gestion, ce qui fait que les écoles doivent rendre des comptes par rapport à la réussite des élèves, comme si c'était un peu des chaînes de production qu'on pouvait évaluer de façon objective, alors que ça n'est pas la réalité. C'est pas ça que j'évalue, là. Moi, j'évalue votre réponse à la tâche. Et si vous faites un bon réseau de concepts, moi, c'est un bonus. Moi, je pense que c'est une erreur de calculer, d'évaluer la réussite du système d'éducation par rapport au taux de réussite, parce que c'est une fausse donnée. On essaie de donner une donnée objective à quelque chose qui est subjectif, puis ça peut pas fonctionner, ça. Hemos heredado el corrimiento del Estado en la década de los 90 en un modelo neoliberal donde la escuela era un servicio, no era un derecho. Un servicio que se paga o no, que puede ser de mayor o menor calidad. Estamos pensando ahora que la escuela lo que hace es acompañar y garantizar el derecho de los pibes y las pibas. On avait dit à notre conseil de classe qu'on allait le faire, mais depuis là, on ne le fait plus. Une éducation publique de qualité, c'est une éducation qui n'entre dans aucune logique de marchandisation ou de marketing. Pourquoi je crois que ça arrive? Pour moi, c'est une dérive sociétale qui a remplacé le statut de citoyen par celui de consommateur. Et donc, autant le statut de citoyen fait appel à l'éthique et à des choses, à la ferveur politique, aux convictions, aux idéaux, la condition de consommateur ne fait appel qu'au portefeuille et au pouvoir d'achat. Pourquoi c'est les animaux, oui? Les animaux, pas parce que l'auteur veut prendre les animaux pour représenter les autres. Ah, un grand... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui. Elle dit que l'auteur fait parler les animaux. En réalité, ce ne sont pas les animaux. Ces animaux-là représentent les êtres humains que nous sommes, vous et moi. Si l'État cautionne et supporte, améliore l'éducation, c'est des vies aussi qui sont améliorées, c'est la société aussi qui est protégée. Donc l'État doit garantir quelque chose au niveau de l'éducation, doit mettre un peu plus du sien pour que l'éducation soit encore meilleure, pour mieux élever et éduquer nos enfants pour demain, pour la société. Le roi, là, le roi de la forêt lion, là, c'est les dirigeants. Nos dirigeants, là, c'est eux. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Donc ça, là, nous appelons ça des figures de style. C'est des tournures stylistiques. Parce que le rôle de l'auteur, c'est de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. In spite of the immensity of the challenge they face, the teachers do not always receive the support they deserve for the demanding job they do. Low wages, poor working conditions, or inadequate training are too often the norm. For instance, in India, thousands of contract teachers are hired to perform the same tasks that regular teachers usually do, except they are relegated to inferior status and treatment. हम लोगों की जो मांगे थी हम लोगों की तो यही थी, एक तो हमें रेगुलर बनाया जाए, रेगुलर टीचर्स होंगे तो हमें 12 माह का वेतन दिया जाएगा और इसमें जो है हम लोगों को छुट्टियां दी जाए, जो हम लोगों की छुट्टियां मिलती हैं वो छुट्टियां हों और हमारा वेतन भी बढ़ाया जाए। हम लोगों को 11 माह की सैलरी दी जाती है और 3,500 रुपये दी जाती हैं और जो मतलब रेगुलर टीचर हैं उनको जो है 25-30 के करीब जो सैलरी दी जाती है, 25-30 हज़ार के करीब सैलरी जाती है। हमें भी लगता है हम इतना मतलब वर्क तो थोड़ा बराबर हम लोगों का बराबर ही होता है कि हमारे लिए भी कुछ हो, हमें भी लगता है कि हाँ हमारे लिए भी कुछ हो थोड़ा, बस ये है। मैटरनिटी लीव भी हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हमारी मैटरनिटी लीव हम लोगों को कभी अगर पड़ जाती है तो उसमें हम लोगों को निकाल दिया जाता है और उसमें हमें सैलरी भी नहीं दी जाती है, हमारी जगह दूसरे टीचर्स नियुक्त हो जाते हैं। Avec le salaire que nous avons ici au Togo, c'est difficile, c'est minime. Depuis 1968, l'indice salarial, c'est resté le même. On n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Alors que le niveau de vie, les choses sont plus chères sur le marché. Significant improvements can be and have been achieved.
But it is a permanent struggle to keep the gains won in the past. Consciousness and determination are necessary to transform the working conditions of teachers and make sure the students share the benefits of having a good educational system. Ma mère est enseignante et quand elle a commencé, en fin des années 60, là, une femme qui était enceinte, elle perdait son travail. Et ensuite de ça, les femmes gagnaient moins cher que les hommes pour le même travail. Donc, toutes ces luttes-là se sont faites avant. Aujourd'hui, quand on est enseignant au Québec, on soit un homme ou une femme, on a le même salaire pour la même ancienneté. Les femmes enceintes, leurs droits sont protégés. Donc, il y a beaucoup de luttes qui ont déjà été faites. Ceci dit, mais on est dans une période où on doit protéger des acquis. Et c'est malheureux, il y a des gens qui ne sont pas au fait de ce qu'historiquement les syndicats ont gagné comme bataille et de ce en quoi ça a résulté. Et donc il y a des gens qui croient que ce qu'on a acquis, c'est venu tout seul et que c'est permanent et que ce ne sera jamais attaqué. On sait très bien pourtant que les acquis sociaux ne portent le nom d'acquis, mais ne sont jamais acquis et qu'il faut continuer à les défendre pour qu'ils restent acquis. Sócrates, dice la segunda premisa, es hombre, pertenece al conjunto de los hombres, ¿sí? Porque también los docentes luchamos por el derecho a una beca para todos los alumnos, por el derecho a una escuela que tenga más o menos lo mínimo que se necesita, que tenga iluminación, que sea confortable para los pibes, digo. En eso el sindicato es fundamental, para que ese debate que puede iniciarse adentro de una escuela mirando a su comunidad, para que esas nuevas experiencias, esas nuevas necesidades que a veces se traducen en condiciones materiales de trabajo de la comunidad docente, se instalen en la agenda política. They experience different realities, and yet there is something universal about being a teacher. It creates a strong sense of solidarity among them, mainly because they share the same objective of making a positive impact on children's lives. Moi, je trouve très dommage quand je vois un peu la réalité de mes collègues ailleurs dans le monde. Il y a des gens qui travaillent dans des situations particulièrement difficiles et j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui font ce métier-là dans des conditions beaucoup plus difficiles que les miennes. Et je leur souhaite vraiment que ça puisse s'améliorer parce que je crois que tout le monde est gagnant. Peu importe d'où on est, là, si la majorité des personnes à travers le monde ont une culture et une éducation valable. Mañana va a ser el taller de alumnas madres. ¿Es el primero acá? Es el primero, sí, que vamos a hacer. Lo que vincula universalmente a los docentes me parece que es esta cuestión, esta voluntad de hacer por el otro, de correrse de lo que uno tiene, de las propias representaciones para generar un cambio en las condiciones de vida materiales o simbólicas del otro. Con más o menos recursos, con más o menos presupuesto, con más o menos conciencia. A veces uno lo hace intuitivamente cuando arranca en la carrera. J'ai du mal quand on compare des écoles dites bonnes à des écoles où la réalité de terrain est radicalement différente et où le métier d'enseignant prend tout son sens et où on doit vraiment élever des enfants qui n'ont aucun stimuli. Alors que j'ai vraiment l'impression que les vrais enseignants et ceux qui doivent faire leur métier avec le plus de maestria sont ceux qu'on associe en général aux écoles dites mauvaises. Teachers face numerous difficulties, it is true, but there are also many rewards. One is found in the eyes of the grateful students. Nous devons essayer de connaître le plus de coutumes possible. Ça me plaît parce que quand je sors dans la ville, je vois mes élèves, ils viennent vers moi. Madame, vous m'avez eu en troisième, madame, vous m'avez eu à tel niveau. Qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, je suis tel, je suis tel. Certains sont devenus de grands messieurs, de grands fonctionnaires. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je réalise que j'ai contribué à quelque chose. J'ai apporté aussi ma pierre. Selon moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Donc, c'est très important et je m'enorgueillis. Ça me fait plaisir. इसमें जब हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा
मतलब जैसे कोई बाहर से आते हैं उनको क्वेश्चन का आंसर देता है या उन्हें कोई मतलब बाहर से आते हैं उनके प्रश्न का उत्तर देता है और वो उससे मतलब उसे जो इनाम वगैरह मिलता है तो हमें अपने ऊपर गर्व होता है कि हाँ इस बच्चे को हमने पढ़ाया और जो हमने पढ़ाया इसने ग्रहण किया, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अपने ऊपर गर्व होता है इस चीज़ का। Puis là, le cadre puis le style, moi, j'irai pas dans la révolution, fait que je fais juste parler de... Tu vas toujours nous revenir à l'idée que c'est une description de la noblesse à l'époque. Quand je vois que mes élèves ont compris que oui, c'était peut-être difficile ce qu'on a fait, peut-être qu'ils ont traversé des moments où ils ont pensé qu'ils n'y arriveraient pas, mais que finalement, en bout de ligne, ils constatent que ce qu'on a fait, ça leur a servi et ça va leur servir encore plus tard. Nos vemos el jueves. Vas a venir conmigo. Sí. Nos vemos el jueves, chicos. En esto de la tarea docente, lo que genera mucha satisfacción es observar en la vida cotidiana de la comunidad para la que trabajamos cambios que tienen que ver con lo que se transmite en la escuela. Cambios en escenas muy pequeñas a veces, pero que dan cuenta de que el pibe está reconfigurando su territorio. Eso a uno le genera satisfacción y hace que uno vaya por más. Dans les bois, se fondent, j'atteigne dans les bois, se fondent sous nos pas. La veille d'automne, emportée par le vent, enroulée par l'automne, tombe en violon. Passez un peu trop vite. Restez, je vais remettre le son, essayez d'être en rythme. Ça va? Le moment où je suis le plus fier et le plus content d'être enseignant, c'est quand, à la veille d'un congé, les enfants râlent parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Donc c'est déjà arrivé quelques fois, et ça c'est vraiment le moment où on se dit, bah, si on est même mieux que les congés, c'est carrément bien. Voilà. Nous, on aime bien la cantine, tous les jours on lit, sauf le vendredi. Le vendredi, c'est le jour des sardines. Bon, on n'est pas obligé de sauter pendant... Normalement. Ça va? Day after day, teachers continue to do their work with passion because this is more than a job. It is a mission. That is why they remain committed to advocate for universal quality education in all countries. Au revoir les enfants, on se revoit vendredi. Oui, il y a de l'espoir, pourquoi pas? Il y a de l'espoir. L'école que moi j'ai fréquentée n'est pas la même aujourd'hui. Il y a une petite amélioration. Donc on a de l'espoir qu'avec le temps, les choses vont aller au mieux. Il n'y a pas de dictée demain. Allez, demain. Je pense qu'on doit toujours, en tant qu'enseignant, promettre quelque chose de plus valable que ce que la société propose. Es en la escuela donde vos tenés la posibilidad de mirar cara a cara al destinatario de esa tarea que se te encomienda desde el Estado. Entonces, la cara y la historia del otro no son datos estadísticos, son una realidad súper palpable. Je suis en train de perdre ma voix, mais c'est comme ça qu'on les vit, nos journées. Ça ressemble vraiment à une journée typique, là, dans mon esprit. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde, tu sais. Puis je me suis rendu compte qu'on ne change pas le monde tout seul, mais quand on est enseignant, là, on peut influencer un peu certaines personnes, donc on contribue. Day after day, teachers put their heart and soul into their job to give a better future to the students. And with our support, they will continue to do so, being firmly convinced that together we can shape a better world.
Let's remember that powerful message at the end of the last film, that together we can shape a better world. I hope you enjoyed watching the films. I hope you had time to reflect a bit. The powerful words of Kailash Satyarthi, our dear friend, that says to us that every child is born to be free. We know that, but we need to remind ourselves every day, and we need to act on what he asks us to do, to break the silence and to stand up. And we may need to do so more than ever now, because we know that at the time of the film, 9 out of 10 children were in school, so 1 out of 10 were not. Now we may face a situation where there may not be 9 out of 10 children coming back to school. We must never give up that the day will come when 10 out of 10 children come back to school. And we must remember the words of the teachers in the day in their life, that the objective of what they are doing is to make a positive impact on their children's and students' lives. It was emotional to see them in interaction on site with children. I hope that all of you out there soon will be able to do that job again on site, and that we keep the message that it has been and it will be a permanent challenge to maintain the battles won in the past and be able to build them in the future. But I am confident that we will do it together. As teachers, as unions, we are taking the lead. And now, my dear friends, we are going to move to another region of the world. We are going to tune in to Africa. After a short break, take a breather and tune in, I think it's, how many minutes? 12 minutes, on the hour, on the dot. Please don't go far away and listen to our contributions from Africa. See you soon.